know this subject, or I don't like this subject, and for that you will be needing more time to read, I will say that keep it little bit aside. Okay, now it's not completely thing that you have to just forget about that subject. Only thing what I'm saying is that in that subject, try to read the part which comes regularly in the examination. It's not that you will have to go for each and every subject into a great depth. Never. It will be that I like the subjects, I may go to the any depth in that subject, but if I'm not very good at that, I start reading that subject and I feel sleepy. So in that case, now this I'm considering that human nature. Okay, otherwise for a student every subject should be equal. But then yes, I feel sleepy or I feel like going away from that book. Then what I should do is that I should stick to the portion which comes again and again. Now somebody has just talked now. Can you tell me that which subject you don't like or which chapter we don't like? Ma'am, Pharmacognosy. ऐसा क्यों, मतलब मेरी समझ में नहीं आता है कि you people, many of the today's students say that they don't like pharmacognosy. Which is the point you don't like in pharmacognosy? मैम एक्चुअली pharmacognosy में ना वो मग करना पड़ता है ना, तो मगिंग मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं मगिंग पसंद नहीं है। लेकिन देखो अभी आपके फ्रेंड्स का नाम आप कभी मग करते हो? नहीं मैम। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि वो आप बार बार बोलते हो, isn't it? आप बार बार बोलते हो। So इसी तरह से, या फिर अगर ये वाला चीज रही तो I will say that is applicable to medicinal chemistry also, that is applicable to pharmaceutics also, because there are something which you have to, they say names of the drugs you have to remember. Here is the same thing, that the botanical names you have to remember. तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो, यहाँ पे नहीं रख सकते हो. So that means it is it's a bias in your mind. ये prejudice है आपका कि हमको ये याद करना पड़ता है. Because you see that if somebody if not applicable to you immediately or not of use to you immediately, but at least you can percolate in your juniors, that these botanical names have a really say rhythm in that. Okay, so try to pick up that rhythm. Okay, just I said that many a times, say ethambutol. Okay, so from ethambutol I get the idea that it has ethylene diamine and it has a butanol moiety somewhere. Now only thing remaining is that I have to join this ethylene diamine and butanol. So ethambutol. So that rhythm itself gives us the idea that what might be the component of that structure and what that structure will be. So similarly is the case in case of in the botanical names. Digitalis lanata, digitalis, yes, anyone? Digitalis lanata, digitalis thapsi, digitalis, yes. Digitalis, very first thing will be digitalis purpurea, digitalis lanata, digitalis thapsi, and so on and so on, so on and so on. Now you can name any compound, name any drug, pharmacognostic drug, and you will be having such a thing. Now reason here is that you don't like it and you feel that you have to mug it because you just with eyes you read it. That sound never comes and never falls on your ear. So again and again, I'm asking, like say, that is my request to all the students always, that whenever you read these terminologies, maybe it which is present in say sutics or chemistry or cognosy, so that sound should be audible to yourself. जब आप पढ़ाई कर रहे होगे शायद घर वाले बोलेंगे पागल हो गई है ये, क्या हमको परेशान कर रही है, but let it be. For example, ludicrous was the question asked. लेकिन ludicrous बहुत बच्चों को ludicrous बोलना भी नहीं आता है. तो ludicrous जब बोलना नहीं आता है तो how you expect that what are the contents of ludicrous they will be able to recall, or they will be able to remember, or they will be interested to find out. और ये नहीं रहा तो फिर आगे का नहीं होता है. So even if like say your examination date is not declared yet, am I right? Yes. Examination date is not declared yet. तो आपके पास में जो भी वक्त है, so try to do your studies in this fashion. अभी जैसा एक one of the representative student have said that एक हमारी reading हो गई है. So very good that one reading is over.
अब दूसरे रीडिंग में आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू आई विल से ब्रश इट अप। ओके, अब ये कंडीशन नहीं है कि मैं आपको बोलूंगी कि भाई आप कोई नई चीज जाकर पढ़ो। ओके, if you have finished everything and then like say look at the previous year's question papers, and you will find that in the previous year's question papers there are many questions which are related to I will say other subjects, which you call it as other subjects, and in that you will find that they are asking the questions related to say schedules. Okay, now we do it in forensic pharmacy, but the in depth they are asking that drug inspectors or his duties are mentioned where. Okay, they are asking that class 1 solvent is there, and then what will be the residue allowed. Okay, or they are asking that the class 1 which are the class 1 solvents, and from the given 4 options identify them. For example, acetonitrile, benzene, methanol, acetone, so on and so on. Okay, in one of the example they are asking say about ICH guidelines specifically for the stability and so on and so on. Now these things probably you may not have studied till this point. So at this point what I will say is that, let's say your 4-5 important subjects, chemistry, physics, cognition and analysis. Apart from that, what we call it as allied subjects. In this allied subjects, maybe it is engineering, maybe it is say forensic or jurisprudence, or something related to newer the things in the news, that those might be asked. So pay attention here. Now when you want to pay attention here, I will suggest you that you have the regular studies. And now as you said that all of you have come voluntary, and all of you are answering let's say enthusiastically, so I consider that yes, definitely, really you are interested and you want to do something well in your career and in life. So you have done your basic homework, you have done one reading is over. Now when you are brushing it up, okay, जैसे आप सुबह में उठ गए हो और आपको उसको ब्रश अप करना है आपका जो पढ़ाई है, so take the subjects which are the important one. When you are becoming saturated, then go for these kinds of subjects. Why I am saying so, देखो whenever there is a fact based some or say regulatory based things, जैसे अभी अगर बोला कि शेड्यूल एक्स में क्या है और शेड्यूल एम में क्या है और ये यहाँ पे क्या है, so these are facts. Always remember the facts. If you yourself are not getting personally across those facts, you tend to forget it. Okay, जब तक आप अगर मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर पर खड़े नहीं रहते हो और शेड्यूल एम चाहिए, कितना एरिया चाहिए, वहां का टैबलेट है, कैप्सूल है, ऑइंटमेंट है, तो कितना एरिया चाहिए, क्या चाहिए, ये जब तक आप personally नहीं देखते हो, chances are that you tend to forget. I am not saying some of the students they have very pictorial memory, some of them have very eidetic memory कि एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाता है. I am very happy for them, but for a normal human being we tend to forget such kind of facts. So such kind of facts you shouldn't do it in a like say in a restricted terms कि मुझे ये याद करना है, मुझे ये याद करना है. You should read it in a casual manner. हाँ, कि कहाँ पे कितना था, वहां का उसका 20 मीटर स्क्वायर था, ओके, वहां का कितना था, उसका 100 स्क्वायर मीटर था, whatever it is. Okay, so it is, let's say, if it sticks to your mind, it's okay. If it doesn't stick to your mind, then again it is okay. Reason is, like say, you don't know that which kind of question is coming. What you are doing is you are preparing yourself so that any kind of question it appears in front of you, you should be able to tackle it, and that tackling should be go in a correct way. So when you are studying these things, like say, use when your brain is saturated, when you feel like now I don't want to study these all technical subjects, at that time you go for such kind of subjects. Okay, जैसे अगर अभी इन्होंने बोला है कि हमको कॉग्निसी नहीं अच्छा लगता है, so that will be my simple suggestion that look at the kinds of questions which are appearing in pharmacognosy. What do you think that what kind of questions appear for pharmacognosy? Yes, anyone? Chemical test and active constituents. Barabar, chemical test and active constituents and so on and so on. So now it will be my simple suggestion that go
or pick up the book, which book you refer, maybe Gokhale Ko Kate or maybe Trees and Evans. I will suggest you that Gokhale Ko Kate is the smaller version of Trees and Evans. So if you are going for Trees and Evans, then it will be my simple suggestion that the chapters are given as per the chemical constituents. तो सिर्फ वो चैप्टर शुरू करो और उसमें कौन से ड्रग्स है इतना देखो. Okay, don't go for reading the drugs for that. So what will happen? So I'm reading glycosides और glycosides में मैंने ये drugs देखे थे. Now this is you are doing in your free time. फिर जब दूसरी बार जब आप free time मिल रहा है तो pick up for alkaloid. Okay, say for example the questions asked in case of alkaloids are the starting material or starting amino acid from which that alkaloid is synthesized. So probably no need to go for reading each and every line. There you will be finding a table. If not a table, you will be finding some chemical reactions given in Trees and Evans. Don't go in detail for those chemical reactions. What you do is that see that what that chemical reaction depicts, whether it is synthesis of, like say, papaverine. So what is the starting material given? Just pay attention to that starting material and the end product. So from this phenylalanine as a starting material, if I'm wrong, you can correct myself. So correct me. So you have there, suppose phenylalanine is a starting material and it is giving you papaverine. Maybe you will be finding somewhere the names which are the what we call it as a rate limiting steps. So these are the crucial points. Say for example, in case of cholesterol, we know that the crucial point for the cholesterol synthesis is HMG-CoA. Okay, and then later on the HMG-CoA reductase action gives the mevalonate, and from that we branch further. Okay, then I may say that there is another crucial point where the squalene is formed. So squalene, it can go into the terpene if the biological system is plant, and it can go into the cyclization and form the gonane-like structures. So let's say I'm not going for the whole of the reaction. I'm not going for in depth, but still, if something is asked related to this, I will be able to play with it. I will be able to at least trigger my mind कि मैंने ये कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, कौन से सिचुएशन में पढ़ा था, मैंने क्या देखा था, वो पिक्टोरियल डायग्राम क्या थी, वो या some or the other things you get the hint from that. Now I always keep on asking the students कि बहुत बार ऐसे होता है कि हमने ये पढ़ा है, मुझे पता है, मेरी नोटबुक में ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे मैंने रेड स्टार बनाया था, वहां पे मैंने लाल और नीला फूल बनाया था, ये याद आता है, लेकिन वो क्या था वो याद नहीं आता है. But in case of GPAT examination, it's not needed that you have to recall it. Reason is you have question in front of you and you have answers in front of you. What you will have to think that you have to go, अरे वो उसमें से hint मिल रही है ना आपको कि वो वहां पे क्या लिखा हुआ होगा. Okay, so that such kind of small hints, these are very crucial when you solve the GPAT examinations. Say all 4 years examination, it is not possible to do the all 4 years syllabus in 4 months or in 6 months or in 4 days. नहीं हो सकता. तो ये जो है, that's why it is called as an aptitude test. They are not calling it as a quiz competition, or they are not calling it as an entrance examination. They are calling it as a aptitude test. Do you have the aptitude to recall or to recollect whatever is there in your brain? Okay, so many times it happens that we have plenty of files with us and they are stored in our computer, but we don't know what the path is. कि मैंने ये रखा है, मैंने ये फाइल रखी है, लेकिन मैंने कहाँ रखी है, B ड्राइव में, C ड्राइव में, D ड्राइव में या F ड्राइव में, नहीं पता होता है, नहीं समझ में आता है. So everything here we have. What is important is that, like say, I just should know that what the path is. तो अभी आपने सबने पढ़ाई कर चुके हो. Okay, अगर मैं आपको immediate बोलूंगी कि ये ड्रग का IUPAC बोलो, will you be able to answer it? Definitely no. Okay, say I may say that I may ask you that, okay, clavulanic acid का IUPAC बोलो, नहीं बोल पाओगे. Okay, but if the 4 options are given in front of you and you have the idea that what the clavulanic acid is, probably you will be able to play with it. Okay. So when you look at the question paper of GPAT, what you find is that there are questions, they are short questions कि वो आपको आना चाहिए as a student of 3rd year or final year.
I'm not completely sure, but probably this year they haven't allowed the third year students to appear for GPAT. Some of your classmates or some of your juniors have tried. Yes or no? Yeah. Are they allowed to appear for the GPAT if they are in third year? They are not allowed now. Probably they are not allowed now. Yes. So let's say the student who is in fourth year, who is appearing for the fourth year and who is also appearing for the GPAT, then let's say something he should know, some basics he should always know. Okay, based on those basics, he should apply that knowledge to the problem at hand. Problem at hand, there is a question in front of you, and then you should like say उसमें वहां पे आपको कोई भी वहां पे आपको क्वेश्चंस हर बार फैक्ट बेस्ड रहेंगे ऐसे नहीं है. Many a times these questions are, say, they will be just checking your memory, they will be checking your understanding, they will be checking your analytical mind कि ये चार में से आप कौन सा किस तीन को आप अलग करते हो और फोर्थ को आप चुनते हो. So there will be analytical mind, there will be applicability है क्या. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बायोफार्म का कोई छोटा सा एग्जांपल पूछा हुआ रहेगा तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो क्या, इतनी जो पढ़ाई की है आपने उस पर से सॉल्व कर पा रहे हो क्या. That is the things. So when you look at the question paper, you will find that some questions are plain fact based, some questions are based on your fact based questions. I will say that they will be based on your memory. Then there will be questions which will be with your analytical mind, then understanding, then you will be having the applicability. तो अब यहाँ पे जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको मालूम होना ही होना चाहिए. जैसे अभी इन्होंने बोला कि भाई बॉटनिकल नेम ऑफ सम क्रूड ड्रग, तो वो मालूम होना ही चाहिए. वो उसमें हम कोई लॉजिक नहीं लगा सकते कि ये इसका बॉटनिकल नेम हो सकता है. Okay, if you are reading that thing again and again, then probably you will be able to do it. So that's what I said कि भाई क्या करो कि भाई कॉग्निसी की बुक ले लो, आप वहां से वो ड्रग्स देखते चलो. If you are picking up the book called as वैलीज में जो दिया हुआ है वो पूरे प्लांट पार्ट के हिसाब से दिया हुआ है. Say for example leaves, the crude drugs which are the leaves as a crude drugs, then they are classified in the chapter of leaves, bark, stem, so on and so on. Okay, so you are getting the one idea from valleys, you are getting another idea from valleys, and I'm considering that you don't like the pharmacognosy subject, so I know that you are not going to be reading into depth, but that doesn't mean that you can ignore that subject, or you cannot. And I know that you are not ignoring, you are just sharing your difficulty with me, that okay, this is the part we don't like much. So this is one way to do it. Another way I will say that just go to the last index of the textbook, जो आपका गोखले को काटे होगा या आपका ट्रीज एंड निवांस होगा, इसके लास्ट पेज पे जाओ. आई फील दैट वैल्यूज you may not have used much, or Brady Tyler you may not have used much, but the last part of the last index of trees and Evans you can pick up. Okay, और वहां से फिर क्या देखते चलो कि भाई ड्रग का नाम, जैसे आप एक दो तीन स्टूडेंट्स बैठे हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, जनरली आई गिव द एडवाइस दैट पढ़ाई आप ग्रुप में या पेयर में या इस तरह से करो, मतलब एक बुक से नहीं पढ़ना है. भाई आप भी ये चैप्टर पढ़ के आओ, मैं भी ये चैप्टर पढ़ कर आता हूँ, एंड देन वी विल डिस्कस इट. सो व्हाट यू कैन डू इज दैट वन पर्सन कैन गो टू दैट इंडेक्स और वहां से बोलो कि अब जैसे मैंने बोला कि क्लाउड, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ क्लाउड, द अदर पर्सन शुड से इट, should be able to say it. Okay, या फिर किसी ने सडनली बोला कि भाई बताओ कि चिराटा का सोर्स क्या है, you should be able to say it. से अगर किसी ने बोला कि काल मेघ क्या है, you should be able to say it. Okay, so this kind of thing, this is a I will say that this is a game. आप इसमें और इसमें यहाँ पे बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे नहीं आया. जो मैंने बोला कि व्हाट इज कालमेक्स और एंड्रोग्राफिस पिनाकुलाटा मैं नहीं बोल पाई, तो इसका मतलब आप जीपैट में फेल हो गए, ऐसा नहीं है. बिकॉज वी डोंट नो दैट वेदर दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड और नॉट, दैट इंफॉर्मेशन विल बी आस्क्ड और नॉट. What is needed is that you are preparing yourself for this. Whenever you are saying the name of the drug, crude drug, say along with it family. बहुत बार आपने देखा है कि विद क्रूड ड्रग का पार्ट, बॉटनिकल नेम और फैमिली, ये भी पूछा जा सकता है. Last time they had in the previous years they were not asking the questions related to assertion and reasoning and assertion,
but last time they had asked one question which was in the fashion of assertion and reasoning. तो अब ये assertion and reasoning और या इस तरह के जो 3 part matching इस तरह के जो होता है, यहाँ पे आपको एक मतलब again I will say the same thing that you should have the fodder to think. आपको immediate वो आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ तो चारा चाहिए ना. That fodder is to be there and you are creating that fodder. तो इसके लिए कॉग्निटिव के पढ़ाई के लिए अब ये एक तरीका रहेगा. दूसरा एक तरीका रहेगा कि सपोज अगर आप पढ़ रहे हो कि भाई सडनली आपके इसमें नाम आया, ओके, से फॉर एग्जांपल क्रोमोन. सो अरे क्रोमोन क्या स्ट्रक्चर है, I don't know what the chromone is, where it belongs, whether it belongs to flavone, flavanol, or it is a basic ring of flavone, flavanol, and all flavonoids. So that can be question. Say for example, I am reading ellagic acid. Question can be there: ellagic acid and gallic acid. What is the correlation between ellagic acid and gallic acid? If you see, these are the type of questions. Say what is the relationship between limonene and other one, uska jo isomer hai, that one. So there can be the question. So here the subject which you don't like much, I will say that don't go on reading in the fashion of one chapter. क्या मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, ये वाले तरीके से मत जाओ. Now this is applicable to everything. अगर किसी को केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता होगा, किसी को सुटिक्स अच्छा नहीं लगता होगा, किसी को एनालिसिस अच्छा नहीं लगता होगा. So for you people, for everyone, I will say that don't start reading the chapter wise. There you try to pick up the information in bits and pieces. और वो bits and pieces पर information आपको gather करनी है, तो it is such a vast field that you don't know, you will be lost there कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. So that guidance will be provided by the index which is given in the end of the book. So maybe जैसे अगर आप पढ़ते चल रहे हो, say maybe it is analysis, और आप पढ़ते चल रहे हो तो Nernst Glover आया. I'm taking the simple example. Nernst Glover और Nernst Glover आया. Okay, दोनों भी पॉइंट नीचे वहां पे एक के नीचे आने वाले हैं इंडेक्स में. So immediately the curiosity should be there. अरे ये Nernst Glover और Nernst Glover क्या डिफरेंस है फिर ये दोनों में? And if you do is that you go to that page and just find it out, it will be your life will be so simple. और इस तरह की जो छोटी-छोटी चीजें आप पढ़ते हो ना, it sticks in your mind. Rather than जब आप एक पूरा चैप्टर पढ़ते हो, तो पूरा चैप्टर जब पढ़ते हो तो आपकी मोटी-मोटी चीजें याद रह जाती है, छोटी-छोटी चीजें जिस पर MCQ बेस्ड आते हैं, जनरली वो आप भूल जाते हो या उनको रिकॉल नहीं कर पाते हो. अगर इस तरह से आप पढ़ोगे तो वो होने ही वाला है. Now again I am saying that आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हो. मे बी जैसे अगर एनालिसिस रहेगा तो एनालिसिस का प्रिंसिपल क्या है वो आपको पता है. ओके, प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आने वाला है तो वो आप शायद सॉल्व कर पाओगे, लेकिन ये जो छोटी-छोटी चीजें हैं और जो आपको ये रिकॉल करनी है वो शायद आप मिस कर जाओगे. So that is one way. Okay, जैसे अगर आपको आते भी everybody knows about it now, Born-Trager test and modified Born-Trager test. Okay, या फिर अगर suddenly question आया कि भाई glucose on reaction with nitric acid gives what? Okay, that can be the question of micro organic chemistry, or that can be question of your cognosy also. Because in cognosy the basic polysaccharide और basic saccharide is glucose, और फिर उसके बाद में आप सब कुछ बना रहे हो तो फिर वो उससे क्या होने वाला है. So what will be formed, or if I'm using not nitric acid but some weak oxidizing agent. Nitric acid is a very strong oxidizing agent. If I'm using a weak oxidizing agent, then what is going to happen? So if you are reading in this fashion, then you will be like, say, you will gain the confidence also. You will have the faith in yourself कि नहीं, मैं ये सब्जेक्ट की भी पढ़ाई कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट्स में मैं इसकी वजह से मेरा स्कोर कम नहीं होने वाला है. And then there is no anxiety, there is no burden much on you, and that way you can go further. Do you feel that it will be helpful what I am saying? Yes, ma'am. जरूरी नहीं है, देखो हर पर्सन का ना स्टडी करने का तरीका अलग होता है.
But like say I have been doing this since last so many years, and when I have given these suggestions to the students कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, and I'm just thinking in the terms that I have sometimes at not very long ago I was also a student and I had some difficulties, okay, और यह मुझे समझ में नहीं आता था, so I'm just thinking yourself, I'm thinking of myself in your shoes and trying to understand that what you are going through. I'm trying to understand कि आपको सच में कहाँ डिफिकल्टी जा रही होगी। तो डिफिकल्टी इसलिए जा रही है कि जब आप अगर आप पढ़ रहे हो, ओके, से फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ रहे हो धातुराष्ट्र अमोनियम, ओके, और धातुराष्ट्र अमोनियम आपने वहां पे हायोसाइमस, एट्रोपिन, हायोसिन, स्कोपोलामिन, स्कोपोलिन, ये सब पढ़ते पढ़ते आप ऑलरेडी केमिस्ट्री उसमें पढ़ रहे हो, आप ऑलरेडी उसमें आई विल से दैट फिजिक्स पढ़ रहे हो, कैल्शियम ऑक्सैलेट कौन से टाइप का क्रिस्टल है और स्टार्च कौन से टाइप का ग्रैन्यूल्स है, सब कुछ आप पढ़ रहे हो, और उसके साथ में फिर ये जो अननोइंग नेम है ये भी आपको याद रखना है, तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है. So it will be much easier if you go through this thing. I'm just picking up the cognitive, considering that the representative student who said that cognitive समझ difficult जाता है. So is it for majority of the students? Yes, ma'am. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके. अब जैसे अभी केमिकल, अब एक का तो बॉटनिकल नेम हो गया, बॉटनिकल नेम आज से आप शुरू कर दो कि बॉटनिकल नेम जोर से बोलना है अलोंग विथ फैमिली. कोई एक बोलो, कोई भी एक बोलो. यू हाउ टू डू दैट एक्सरसाइज. आई वॉन्ट लेट यू गो एज इफ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. कोई भी ड्रग बोलो, क्रूड ड्रग बोलो. Anyone? Come up fast. Fast, please. कोई भी बोलो, ऐसा कुछ नहीं है कि अब आपको आते उसका बॉटनिकल नेम आपको आता होगा, नहीं आता होगा, कोई भी चलेगा. यस, विंका. विंका, हाँ, विंका का क्या है? विंका बोलो बोलो, फास्ट फास्ट बोलो. Vinca rosea, am I right? Vinca rosea family. Apocynaceae family. Apocyn family जिसके भी ज्याला आपण म्हणतो ज्याचे शेंगा असतात ती फॅमिली Apocynaceae असते. ओके. सेनाची फॅमिली काय आहे? सेना थोड़ा सा इथे ट्रबल येतो आहे. बट देन व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. और बहुत सारे आप देखो, हर एक प्लांट का आपको नाम आना चाहिए जरूरी नहीं है. ईच एंड एवरी प्लांट क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, लेकिन जो आप रेगुलर पढ़ाई में किए हैं उतने का तो आना चाहिए. दैट इज वन. एंड ये एक्सरसाइज करोगे तो जस्ट डू दिस एक्सरसाइज फॉर 8 days. एक 10-15 मिनट रोज करो, एक 10-15 ड्रग के. ओके, हाँ. अब केमिकल टेस्ट, यहाँ पे क्या डिफिकल्टी आएगी? दैट फॉर केमिकल टेस्ट इफ यू सी द क्वेश्चंस देन दे आस्क दिस केमिकल टेस्ट इज used for which kind of crude drug or which kind of chemicals in that crude drug. So I said Bontrager, modified Bontrager. I may say Vitalis test. I may say Mervin, say your what is that? Dragon-Dov test, and so on and so on. So here to study it, I will ask you do it in a stepwise manner. Very first thing, the name of the test and for what it is used. That's it. अब ये मुझे लगता है हार्डली आपके पास में 30 या 35 टेस्ट हो गई है, इससे ज्यादा टेस्ट नहीं होगी. So this 30-50 or even if you can just put in Google that the chemical test for phytopharmaceuticals, if nothing else you will find the list of the test. Okay, so just look at that list of the test and find out, look at that name and try to recall कि ये कौन से ड्रग के लिए यूज हुआ है. That's it. At the first go, don't do anything else. Don't rush to read everything related to that. Next one,
अब एक बार आपने ये कर लिया तो नेक्स्ट वन आप जाओ, that if I am saying that drag and drop is used for so and so, now next question will be drag and drop reagent means what? Okay, go to that point. अब ये सब टेस्ट के लिए आपने कर लिया होगा, जैसे आपने 20-25 मिनट लगा के, दिन में का 20-25 मिनट लगा के ये कर लिया. नेक्स्ट डे देन गो फॉर लाइक से व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट, कलर आता है या प्रेसिपिटेट आता है, and then I will say that go for the what is the color and what is the kind of precipitate. Even if you are not going into that much depth, you will be able to answer the question if it comes in front of you. अब यहाँ पे आप सडनली जैसे आप कर रहे हो कि भाई जनरली क्या होता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट ये इसके लिए यूज होता है, इसमें ये होता है dissolve this and this and this and this and then take the sample and put it into this and heat it for 15 minutes and then take up the chloroform layer and put it in this and then the color will be so and it will be considered that it contains the steroid. ये नहीं, इकट्ठा नहीं पढ़ो. When you are reading it, it will be in this fashion. जैसे अगर मैं सिमिलर भी यही चीज अगर बोलूं कि नेम रिएक्शंस के लिए, तो नेम रिएक्शंस में क्या है ना, हार्डली देयर आर 40 नेम रिएक्शंस व्हिच आर कॉमनली आस्क्ड. तो अब ये नेम रिएक्शंस में आई विल सिंपली से दैट फर्स्ट गेट एक्वेंटेड विद द नेम्स. लेकिन हमको वो नाम ही लेना नहीं आता है, फिर हम अंदर का आगे पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है. सो गेट एक्वेंटेड विद द नेम्स. अभी आपको पूरे 40 नाम आपको मालूम होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी एबल टू रिसाइट देम. क्वेश्चन आने वाला नहीं है कि कौन से 40 रिएक्शंस आपने पढ़े हैं बोलो. It should be like say if the question comes, then they say for example Clemenson's reduction, okay, open hour oxidation. ये अरे open hour oxidation ना पढ़ा हुआ है मैंने. Okay, I know that. It gives you confidence. Next one, what open hour oxidation did? Open hour oxidation converted the secondary alcohol, or it was a reaction for secondary alcohol. That's it. What is the starting material for this reaction? Then ask the question, what is the end product? कोई भी reaction मतलब some compound is converted to something. So the secondary alcohol is getting converted to ketone. Oxidation, you are removing hydrogen. Oxidation. Now this way, I will say that go for all the reactions. For example, Beckmann's rearrangement. What I will say that oxime, ketone or oxime, ketone actually, oxime is a reactant. The oxime is getting converted to amide. That's it. Hoffman's reaction. Amide is getting converted to amine. That's it. तो अगर मैं फर्स्ट रीडिंग में मैं बस इतना ही कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आगे कुछ नहीं कर रही हूँ. योर टेक्स्ट बुक इज द सेम, बट देन यू आर पेइंग अटेंशन. मुझे टेक्स्ट बुक में ये मैंने यहाँ पे पढ़ा है, आगे मुझे नहीं जाना है, बिकॉज इट स्ट्रेसेस मी एंड इट कंफ्यूजेस मी. तो मैं सिर्फ इतना पढ़ूंगी. अब ये इस तरह से होने के बाद में 40 रिएक्शंस के, आई मार्क माय वर्ड दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल एटलीस्ट 25 रिएक्शंस इन द नेक्स्ट रीडिंग. 15 के शायद आप भूल जाओगे. किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होगी तो वो भी याद रह जाएगी, लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी एवरेज 15 आप भूल जाओगे. डोंट वरी, डोंट कीप फोर्स और डोंट फोर्स योरसेल्फ कि अरे वो मैं 15 कैसे भूल गया, मुझे आना ही चाहिए. नो, चांसेस आर दैट कि जो आपको 25 याद रहे हैं उसी पर क्वेश्चन आए. सो व्हाई यू आर वरिंग योरसेल्फ कि जो 15 नहीं मुझे याद नहीं रहे उसी पर क्वेश्चन आएगा. और अगर उस पर क्वेश्चन आता भी है तो 25 तो आपको याद है ना, तो 25 में से आप उसको इलिमिनेशन कर सकते हो ना. 25 में कि 4 आ गए, 3 आ गए नाम समझ लो, और वो 3 नाम आपको याद है, चौथा नाम आपको याद नहीं है. तो 3 में क्या है ये आपको पता है, तो आप अपने आप बोलोगे कि जो चौथा बचा है वो यही है. So what you will have to do is that you like say what you people do, or rather when I was a student also I also did the same thing. कि हम ना सारी चीजें मतलब हम ज्याला आपण म्हणतो ना ताट समोर आलं ना की ते सगळं आतमध्ये एकाच दमात घ्यायची प्रयत्न करतो. तसं नको आहे. ओके, जसं आपण डेझर्ट सगळ्यात शेवटी घेतो तर तसं ते शेवटीच पाहिजे ना.
पहिला बाद दुसरा बाद जे काही असेल ते त्याचप्रमाणे इथे अभ्यासही तसाच पाहिजे जसं आपण क्लासिफिकेशन करतो त्याचे फॉर एक्झाम्पल आय विल गो लिटिल बिट आय विल डेविएट माय सेल्फ कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग एंड इट्स क्लास दिस इज द रेगुलर क्वेश्चन am I right but none of you are saying that we find difficulty in this reason is since there are questions always asked you have done the studies and you have done the studies for example if I'm asking you जैसे अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे they are asking the questions on anti-diabetic they are asking questions on anti-coagulant they are asking questions on some anti-cancer compounds which are the newer one और अगर suddenly मैंने पूछा कि gliflozin it belongs to which chemical class or I may ask gliflozin it belongs or its mode of action is what A B C D आपने ये किया है can anyone tell me that what it is any gliflozin I'm just using the last name ribogliflozin for example ये क्वेश्चन पूछा हुआ है for example the previous year they had asked the question gliptin tengliptin remigliptin what is gliptins are okay अब ये आप आंसर कर पाए gliflozin का क्यों नहीं किया Are you getting? I'm not saying that your studies are or say your studies are flawed. What I'm saying is that because let's say हमको पता है कि ये पूछते हैं तो हम उसकी पढ़ाई करके रखते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं है ना कि जो आपने पढ़ा है उसी पर पूछने वाले हैं It can be from anyone. Suppose since even on Sunday you have come here and you are sitting so I'm considering that you are motivated enough and your career goals are set. So probably just qualifying GPAT is not your career goal. Your goal might be to get entry into a good institutes, maybe appear for NIPER JEE examination. Maybe your goal is to have to stand in the first 10 students so that you can get it into ICT Mumbai, which is right now in this today I will say that it is the best. Even students are preferring over NIPER. Mohali also. So your aim is that. तो हमको ये नहीं पता कि भी कौन से क्वेश्चन पे कौन से इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं. So our aim is to go on reading and reading and reading. You did one reading. Okay. Now with this one reading, I will say that you have covered all the things which are must to know, all the things which are desirable to know. And now you have to cover nice to know. Ab gliflozin ka question, I won't say it is a nice to know. It is desirable to know because these are in market. All the information is appearing in Wilson-Giswold or in Foye or in Rang and Dale, which are the standard books for pharmacology, medicinal chemistry, and others. So when you are studying, say for क्लासिफिकेशन ऑल्सो व्हाट यू डू इज दैट जैसे पहला क्लास अगर एंटी डायबिटिक चैप्टर लिया तो पहला क्लास इंसुलिन डेरिवेटिव्स पेरेंटल कंपाउंड्स एंड ओरल कंपाउंड्स पेरेंटल कंपाउंड्स इंसुलिन दैट्स इट ओके नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड इज इट कैन बी वेरी सिंपल लास्ट ईयर दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चन हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन आप बोलोगे क्या मतलब क्या बच्चों क्वेश्चन है लेकिन बच्चों क्वेश्चन में क्या होता है 56, 57, 52 ऐसा होता है ना तो 52 या 51 ओके अब ये आप बोल रहे हो तो अब ये इसमें बहुत बार समझ लो नंबर 1 पर 5 दिख रहा है तो यू पिक अप 1 क्योंकि आप आगे का नंबर देखते ही नहीं हो वेरी कॉन्फिडेंट आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि भाई 51, 52, 53, 54 तो जैसा पहला 5 दिखा आप उसको प्रेस कर देते हो because you want to use that time for the next one. So another one that whenever you are reading or whenever you are doing your exercises in such a way when you are appearing for the examination make it sure that
you are reading all the 4 options unless and until you are completely sure. छोटे छोटे ऑप्शंस है तो आपको पूरे पढ़ना ही है. हाँ, अगर वो सेंटेंसेस पे जा रहे हैं और आपका टाइम जा रहा है, then I will say that go by your instinct कि आपको you will have to pick up the words from those and visualize कि आप कौन सा आपका आंसर होने वाला है. Okay, so when you are studying the maybe cognizy, say for example chemical test, maybe organic chemistry, for example name reactions. So what is the name of the reaction, for what it is used, what is the reagent, and lastly what is the result. क्या कलर या प्रेसिपिटेट या क्या क्या हो रहा है वो देखना है. अगर केमिकल रिएक्शन नेम है तो what that reaction indicates, which is the substrate getting converted to product. ये आपका पहला स्टेप रहेगा. दूसरा स्टेप रहेगा व्हाट इज द रिएक्शन कंडीशंस. फॉर एग्जांपल जैसे अभी 2 बोला, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट एंड ओपन और ऑक्सीडेशन. और ओपन और ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट है, कौन सा है ओपन और का ऑपोजिट? एमपीवी रिडक्शन. सो व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ओपन और ऑक्सीडेशन? एनीवन? जब आप ये बोल रहे हो तो I'm feeling that yes, I'm feeling happy that you have done your studies. Aluminium tertiary oxide and yes. Okay, now just understanding यहाँ पर. हाँ, अब मैंने आपको बोला कि ओपन और ऑक्सीडेशन इज कन्वर्टिंग the secondary alcohol to ketone. बराबर? तो अगर आप इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख रहे हो तो what he said is completely correct, that aluminum tertiary butoxide, but this reaction will not happen if you are just putting the aluminum tertiary butoxide in alcohol. Never it will happen. What you will have to use along with it is acetone, so that alcohol will be oxidized and acetone will be reduced. So always you will see that when you are using open or oxidation, the reagent is tertiary aluminum butoxide or any kind of alkoxide, which is bulky one, plus acetone. Or MPV rahega, so it is going to be alcohol is getting converted to MPV reduction रहेगा, तो ketone is getting converted to alcohol, and in that case the reagent will be again same, aluminum tertiary butoxide. Only thing is that along with that you will be using isopropyl alcohol. Getting my point? So you are understanding the difference also. Say for Beckmann's rearrangement, it has to be, the reagent has to be acid, any acid, either Lewis acid or it can be the Arrhenius acid, H plus, or it can be any Lewis acid. The starting material is oxime converted to amine. So this is the first step is name of the reaction. Next step will be that what are the starting material and the product. Next step is what is the reagent, and lastly then whether you are able to write that reaction or not, whether you are able to recall the mechanism or not. Nahi bhi aaya to koi baat nahi. Another way to do the chemical reactions, name chemical reactions, and for that matter it goes for the cognizy also. कि जैसे अगर बोला कि भाई Hoffman's rearrangement, that amide is getting converted to amine, so I should be able to write R C double bond O NH2 getting converted to arrow R NH2. ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन जब आपने लिखा तो इसको थोड़ा सा आंख भरकर देखो, डोळे भरून बघा, तिथे कळतं की अरे एक कार्बन गेला. मग तुम्हाला ते कधीच म्हणजे ते पाठ करायची गरज पडत नाही. Hoffman's rearrangement is amide from which amine is converted, which is less than 1 carbon. अरे रिएक्शन सांगते ना, RCONH2 getting converted to RNH2. So it is, say, chemistry or chemicals speak to you.
ऑल केमिकल्स स्पीक टू यू, ऑल स्ट्रक्चर स्पीक टू यू. आपण आंधळे बहिरे मुके असतो. मुके असं की आपल्याला ते जोरात बोलायची लाज वाटते. From 100 students, I know that there are 70 students who cannot pronounce propranolol properly. If the students are appearing for the interviews, they are asked that give us the names of few names of the drugs. 100 मधल्या कमीत कमी 50 मुलांची गाडी आस्पिरिन आणि पॅरासिटामॉलच्या पुढे जात नाही. तेवढं तर एखाद्या लेमनला पण माहित असतं, आपल्यापेक्षा कदाचित जास्त माहित असतं. मग त्यांनी का बरं तुम्हाला ऍडमिशन द्यावी किंवा का बरं तुम्हाला जॉबला घ्यावं? Okay, so that's what it is. So chemical reactions, you will do this for pharmacognosy. For another question which they are regularly asking is microscopy of the drug. Okay, थोडेसे त्या प्रकारचे क्वेश्चन्स बऱ्यापैकी आता कमी झालेले आहेत. पूर्वी समजा फार्माकॉग्नसीचे 25 क्वेश्चन असतील तर 5 क्वेश्चन्स तरी थोडेसे याशी रिलेटेड असायचे. मागच्या 2-3 वर्षांपासून थोडे अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स कमी झालेले आहेत. बट देन I will say that it will be my suggestion की तुम्ही व्हॅलीज हे पुस्तक घ्या. फार्माकॉग्नसीचे व्हॅलीज. वेळ आहे तुम्हाला, तुमचं एक रीडिंग झालेलं आहे. ज्यांचं झालेलं नसेल त्यांनी नाही घेतलं तरी चालेल, काही अडचण नाहीये. म्हणजे मी जे सांगते ते काही म्हणजे ब्रह्मवाक्य असं नाहीये. It varies from person to person. But then suppose you have done it, then pick up the book called as valleys. जसं तिथे सांगितलं की तुम्हाला leaves, bark ह्या प्रमाणे तुम्हाला चॅप्टर्स मिळतील. स्टार्ट रिडिंग द चॅप्टर. आता म्हणजे आता माझे स्टेटमेंट टोटली वेगळे झाले की स्टार्ट रिडिंग चॅप्टर. तिथपर्यंतच वाचायचं जिथपर्यंत तुम्हाला कळतंय. जिथे तुम्हाला वाटतंय की मला हे कळत नाही, सोडा तिथे. रिझन इज लाईक से जिथे आपल्याला जसं लीव्हचा चॅप्टर आहे तर तिथे तुम्हाला ट्रायकोम्स, स्टोमॅटा, बाकी सगळ्या जे काही टर्मिनॉलॉजीज आहे त्या सगळ्यांचं हे मिळणार आहे, जिस्ट मिळणार आहे. ओके, व्हॉट डू मीन बाय हॅडाथोड मिळणार आहे, व्हॉट डू मीन बाय सिकॅट्रिक्स मिळणार आहे. त्या टर्मिनॉलॉजी तिथेच तुम्हाला मिळत चालते. त्याच्यानंतर एक जनरल मायक्रोस्कोपी दिलेली असेल की लीफचा असेल तर त्याची मायक्रोस्कोपी कशी असते. म्हणजे लीफ असेल तर यू विल बी हॅव्हिंग अपर इपिडर्मिस, यू विल बी हॅव्हिंग लोअर इपिडर्मिस, यू विल बी हॅव्हिंग इन बिटवीन द वस्क्युलर बंडल्स, यू विल बी हॅव्हिंग कोलेनकायमा. यू विल, जर तुम्हाला क्युटिकल असेल तर क्युटिकल दिसेल, ट्रायकोम्स असतील तर असतील, कव्हरिंग आहेत की नॉट, की काय म्हणतात तुम्ही कव्हरिंग ट्रायकोम्स आणि अजून दुसरा कुठला टाईप, glandular trichome. So whether you have the covering trichome, glandular trichome or something, trichomes फक्त upper portion ला आहेत की lower portion ला आहेत, अशा प्रकारची सगळी इन्फॉर्मेशन मिळेल. आता ही इन्फॉर्मेशन I could have said it in completely like say in English, पण आता माझा उद्देश हा आहे की तुम्हाला ते समजायला हवं की मी मायक्रोस्कोपी वाचतोय म्हणजे मला मायक्रोस्कोपी परत पूर्ण लिहायची नाहीये आन्सर पेपर मध्ये, मला ती फक्त समजायला हवी. आणि ती पिक्चर बघून मी समजते आहे ना की मी ते त्याचे स्टेटमेंट बघून. हा, पण ह्याला कोलेनकायमा म्हणतात हे बघायला मला थोडंफार खाली बघावं लागेल, खालचं काहीतरी वाचावं लागेल, आणि ते तेवढं तुम्ही केलेलं आहे. सो सपोज आय एम गोइंग फॉर द नाव द मायक्रोस्कोपी फॉर डिजिटॅलिस. आय डोंट हॅव टू रीड द कम्प्लीट मायक्रोस्कोपी ऑफ डिजिटॅलिस. रिकॉल की लीव्सची मायक्रोस्कोपी कशी असते, आणि आता त्या मायक्रोस्कोपीचं डिजिटॅलिसच्या मायक्रोस्कोपी बद्दल बरोबर कंपॅरिझन करा. ओके, अरे इथे पॅलिसेड सेल्स आहेत ना, सिंगल लेयर्ड आहे. अरे इकडे पॅलिसेड सेल्स आहेत ना, डबल लेयर्ड आहेत. संपलं. अरे इकडे स्टोमॅटा ना अनेसोसायटिक आहे, इकडे अॅनिमोसायटिक आहे, हा इकडे आहे. संपलं. ओके, सो दॅट इज द वे यू विल डू इट. आता समजा तुम्ही बार्कचं करत असाल तर मग बार्क मध्ये काय काय असतात, कुठले रेज असतात, मेडुलरी रेज कुठे आहेत किंवा कुठे नाहीये. इफ रूट अँड रायझोम या मायक्रोस्कोपी मध्ये महत्वाचा फरक काय आहे. सो दीज आर द क्वेश्चन्स आस्क्ड.
So again, like say you did your studies, now the last your aim is to get good marks. Okay, your aim is to score high. मग ह्याच्यासाठी आता वेळ आलेली आहे की कुठले प्रश्न विचारले जातात हे बघणं, कुठले प्रश्न कॉमनली विचारले जातात हे बघणं. Say for example, you will see that always the questions are asked on penicillin or beta-lactam rather than saying penicillin, beta-lactam. मग मला beta-lactamचं जर मी सोडलेलं असेल, माझ्या फर्स्ट रीडिंग मध्ये व्यवस्थित झालं नसेल तर मला ते वाचायलाच हवं. If you see further, the questions are always asked related to viscosity, related to micromeritics, physical pharmacy. जर मी नसेल वाचलं, माझ्याकडनं चूक राहिलं असेल की मला ते मी वाचलं पण ते आता क्वेश्चन सॉल्व करतोय मी, तर त्यावेळेस माझं उत्तर चुकतं आहे. Go back, because these are the questions, these are the I will say knowledge domains on which questions are continuously asked. So you will find that there are few kinds of questions. Steroid वरती क्वेश्चन साधारणपणे असतो, विस्कोसिटी वरती क्वेश्चन्स असतो, मॅक्रोमेरिटिक्स वरती क्वेश्चन आहे, केमिकल टेस्ट वरती क्वेश्चन आहेच आहे. से यू हॅव द क्वेश्चन रिलेटेड टू एज आय सेड बीटा-लॅक्टम वरती आहेच आहे. कोलॉजी मध्ये तुम्ही बघत असाल तर अँटी डायबेटिक वरती साधारणपणे क्वेश्चन विचारणं मागच्या 3 वर्षांपासून कंटिन्युअस क्वेश्चन्स येत आहेत. अँटीकॉग्युलंट वरती कंटिन्युअस क्वेश्चन्स येत आहेत. Okay, so it can be, let's say I haven't studied rivaroxaban. Rivaroxaban belongs to which class of drug? आता जर मी खाली दिलेलं असेल अँटीकॉग्युलंट, अँटी डायबेटिक, अँटी एंजाइनल, अँटी फंगल, the question is very easy. Okay, now that too when you know the drug. पण आता rivaroxaban मी कधी बघितलंच नाहीये, मी ऐकलंच नाहीये, मग आपल्याला ते देता येणार नाही. आन्सर म्हणजे किती सोपं असलं जर कोणी विचारलं तर हा क्वेश्चन आय विल से दॅट इट इज मस्ट टू नो एरिया, माहिती पाहिजेच पाहिजे, दॅट इट इज अ अँटीकॉग्युलंट. दे हॅड आस्क्ड द क्वेश्चन दॅट rivaroxaban इज anticoagulant because it acts as inhibitor of, it acts as inhibitor of, yes, factor 10A. Okay, factor. So it you have the XA-ban, XA. Now this person has studied. ज्यांनी अभ्यास केले म्हणजे विसरून गेला असेल तर XABAN, फॅक्टर XA बॅन करतो, एक्साबॅन, झबॅन, तुम्हाला काय प्रोनाउन्स करायचं करा, एक्साबॅन. The question asked is मागच्या 3-1 वर्षांपासून क्लोपिडोग्रेन. Question is asked on clopidogrel. Question is asked on adenosine receptor agonist, antagonist. So if this is the area on which question is asked, then you should pay attention to that. Then you have, say for example, if you go back, you will see that questions are being asked for last 5 years on the terminology related to cancer. मग ती तुमची सिंपल कार्सिनोमा आहे की लिम्फोमा आहे इथपासून तर मग अपोप्टोसिस काय आहे इथपर्यंत टर्मिनॉलॉजीज विचारली जाते आहे. So if you haven't done it, then go and just search for these terminologies. So at this point, my suggestion will be, the students who have done the studies, my suggestion will be, मागच्या 5 वर्षांचे question papers बघा. Pick up the questions which are continuously being asked. Okay, so and if you have somewhere, if you have missed it, then go and find it out. Questions are being asked in organic chemistry related to the mechanisms such as your SN1, SN2, E1, E2. मग ते तर must to know area आहे, questions त्याच्याबद्दल विचारले जातात. Say when I was asking you the chemical name and chemical reactions with name reactions, त्याच्यामध्ये पुढचा जर मला क्वेश्चन अवघड बनवायचा असेल तर मी पुढचा क्वेश्चन विचारेल की सो अँड सो केमिकल रिएक्शन, the name of the chemical reaction, say for example Friedel-Crafts reaction, what is the intermediate formed in Friedel-Crafts reaction?
I may ask them, what is the intermediate formed in maybe pinnacle rearrangement? Or if I want to ask very like say, why is specifically, I will write in one column names of 4 reactions. In another column, I will give the intermediate. Intermediate can be carbocation, carbanion, free radical, and something else. Or it is a, I will say that it is what is called as pericyclic reaction. It may happen. So that is the next portion. So not essential that each and everything you should, like say, you should be able to memorize. काही गोष्टी वाचत चालायच्या, लक्षात राहिल्यात तर ठीक आहे, नाही राहिल्यात तर काही हरकत नाही, प्रश्न त्याच्यावरतीच येईल असं आपण सांगू शकत नाही. Okay. Another thing which you see that what are the kinds of question asked is simple terminologies related to your anatomy and physiology. Okay, समजा आता simple एक anaplasia, it comes to related to cancer. I will say anaplasia. What do you mean by anaplasia? What do you mean by chemotaxis? What do you mean by diaphoresis? So such kind of questions are also asked. So GPAT doesn't mean that you always have to go and study into deep, into very deep and very deep. It's not. The question asked can be very, I may say, very stupid one also, kind of quiz. बॉडीतली सगळ्यात मोठी बोन कुठली आहे किंवा सगळ्यात छोटी बोन कुठली आहे. Such kind of questions are also being asked. पण आपल्याला काय आहे, आपल्याला कुठलाही क्वेश्चन आला तर आपण तयार असायला हवं. मग त्या तयारी करता काय करायचं, तर त्या तयारी करता कमीत कमी मागच्या 5 वर्षांचे क्वेश्चन पेपर्स अनालाइज करा, सोडवायचा प्रयत्न करा. हाऊ? ओके, कुठलाही क्वेश्चन पेपर घ्या, टाइम लावून तो क्वेश्चन सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. ऑन अ पेपर राइट 1 to 125. गो ऑन रायटिंग युअर आन्सर्स. जेव्हा तुम्ही त्या आन्सरला शुअर असाल, गो अहेड. जेव्हा तुम्हाला अरे हे आन्सर बरोबर आहे की चूक आहे हे मी सांगू शकत नाही, जेव्हा असं वाटेल त्या क्वेश्चनला काहीतरी मार्किंग करा, ॲस्टेरिक्स किंवा काहीतरी मार्किंग करा तुमच्या पद्धतीने. And then check your answers. Important point for solving the GPAT, whether to take the risk or not to take risk. Say the student who stands first for the last 4, maybe all the years, if it is seen, मग 125 क्वेश्चन मध्ये म्हणजे 500 मार्कांपैकी सगळ्यात जास्त मार्क किती आहेत, तर एक साधारणपणे 320, 325, 340 पर्यंत जातात. म्हणजे काय झालं की 125 पैकी प्रत्येक क्वेश्चनला 4 मार्क आहेत. 125 पैकी तुम्हाला 320 मार्क्स, म्हणजे 500 पैकी 320 मार्क्स हवायला पाहिजेत, तर किती क्वेश्चन्स बरोबर यायला पाहिजे? किती? 80. बरोबर आहे. आता इथे बसलेल्या कुठल्याही मुलाला मी विचारलं, कुठल्याही स्टुडंटला विचारलं, 125 पैकी 80 क्वेश्चन्स बरोबर येऊ शकतात की नाही, यू विल बी कॉन्फिडंट, हो येऊ शकतात ना. बरं ठीक आहे, तिथे आणि जर तेवढे 80 क्वेश्चन्स बरोबर आले तर यू विल बी स्टँडिंग फर्स्ट ऑल ओव्हर इंडिया. आणि जर क्वालिफाय पाहिजे असेल तर क्वालिफायला तर किती लागतात मार्क्स? साधारणपणे 160, 100, मी फार तर फार म्हणेल 200 मार्क्स लागतात. म्हणजे किती झालेत, किती क्वेश्चन्स बरोबर यायला पाहिजे? 50. 125 पैकी 50 क्वेश्चन्स बरोबर येऊ शकत नाहीत का? आता ही एक्झाम घेतली तर यायला पाहिजे, बरोबर आहे. पण मग आपलं चुकतं कुठे, मग आपण क्वालिफाय का होत नाही? तर आपण जे 50 क्वेश्चन कुठले बरोबर आहेत याचा आपल्याला कॉन्फिडन्स नसतो ना, की मी हे 50च सॉल्व्ह करेल आणि बाहेर येईल आणि मी क्वालिफाय होऊन दाखवेल. कोणी या छाती टोकपणे सांगू शकतं का? नाही. सो दॅट मीन्स नेक्स्ट वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन्स and we should solve questions.
जर तुम्ही कमी क्वेश्चन सॉल्व्ह केले तर तुमचा स्कोर हा नेहमी कमीच येणार आहे. ओके, थोडंसं बघायचं की कसं कमी येईल म्हणून. विल यू लाईक टू सी दॅट हाऊ इट विल बी लेस? एक 2च मिनिटं मग. आय विल शेअर द स्क्रीन. एक 2च मिनिटं. Is it shared, sir? Yes, ma'am. Okay. Now you can see here simply कि आता presentation mode. You can see here कि एक थोडंसं तुम्हाला मोटिवेट किंवा ट्रिगर करण्याकरता करते आहे की नंबर ऑफ स्टुडंट्स अपिअरिंग इज अबाउट 45,000. ओके, 2013 पासून 22 पर्यंतचा डेटा दिलेला आहे 45,000. आणि तुमचा आय विल से दॅट हिअर इन 2022-21 360 मार्क असलेला थर्ड रँक होता, जवळपास 360 मार्क असलेला फर्स्ट रँक होता, 357 असलेला थर्ड रँक होता, 315 जुने वगैरे असे आहेत. आणि ज्यांचे निगेटिव्ह मार्किंग आहे 50,000 पैकी स्टुडंट्स क्वालिफाय होणारे आहेत जवळपास 5,000. म्हणजे 100 मधून Ma'am, sorry to interrupt you. Here, please go to the presentation mode. The slide is not completely visible. एक मिनिट. I will stop sharing. I had done it actually. Screen share. Just a minute. Escape. झालंय सर? Click it again, ma'am. नहीं नहीं क्लिक फिर से कीजिए. क्लिक कीजिए. नहीं, मैं तो अभी मैंने तो बराबर किया. एक बार फिर से. ओके, ठीक है. मैं ना बाकी के सब बंद कर देती हूँ और फिर इसको ये करती हूँ. एक मिनट सर. सर अब हुआ है? नहीं. दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है. हाँ, ओके. से अब यहाँ पे आई हैव शोन दैट व्हाट इज द statistics and you are going to the part of that statistics. I want that you should not be there in the negative marking. You should be there here somewhere in this like say the qualified students. तो अगर 45,000 स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं और उसमें से 4500 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो रहे हैं, so you can find the ratio. So now I will say that out of the 100 students who are sitting here, by like say just by fluke also there will be 10 students who will be qualified. Okay, I don't want that these 10 students should be by fluke. I feel that here all the 100 students who are sitting, they should be qualified. Now simply say I'm asking here that the cutoff say for example 360, तो मतलब यहाँ पे हो गया कि आपको 90 क्वेश्चन सही आना चाहिए और कट ऑफ यहाँ पे समझ लो 190 या 180, तो आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट आना चाहिए. तो ये इतने क्वेश्चंस करेक्ट आने वाले हैं आपके. सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग जा रहे हैं, इस पर से नेगेटिव मार्किंग आते चलेगा. Okay, so for this if you go further,
if you go further, say अब यहाँ पे से द स्टूडेंट्स, अगर हमने पूछा कि भाई आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो ऑल इंडिया रैंकिंग 1 है, आपने 125 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो एवरेज आता है 110 से लेकर 115। मतलब द ऑल इंडिया स्टूडेंट 1 he also don't solve all 125 questions, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये रॉन्ग जाने के चांसेस है। So he solves around 110 to 115 questions. ये जनरली रेशियो, ये जनरली रेंज रही है। अब ये रेंज रही है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, what you can see that 110 क्वेश्चन सॉल्व किए, और उसमें से अगर उसके 90 क्वेश्चन सही आए, 20 क्वेश्चन अगर उसके गलत हुए, तो तब उसका रैंक, उसका स्कोर बनता है 340। ओके, इसका मतलब 110 में से 90 क्वेश्चन अगर आपके सही है और 20 क्वेश्चन रॉन्ग है, स्टिल यू आर ऑल इंडिया रैंकिंग 1। और इमेजिन करो कि आपने सिर्फ 90 ही क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने किए सिर्फ? अगर आप 90 ही क्वेश्चन सॉल्व करते हो और 90 क्वेश्चंस में से 86 क्वेश्चन बराबर जाते हैं, लुक एट द रेशियो, रेशियो इज गोइंग करेक्ट, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ गोइंग करेक्ट इज हायर हियर। जब आपने 90 क्वेश्चन सॉल्व किए, 86 क्वेश्चन बराबर आए और 4 क्वेश्चन गलत गए, तब आपका स्कोर बन रहा है 340। मतलब जितना आप कम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उस वक्त पे आपका एक्यूरेसी रेट बहुत ज्यादा चाहिए टू गेट द हाई स्कोर। और अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करते हो, तो भले ही आपका एक्यूरेसी रेट बहुत ज्यादा नहीं है, स्टिल चांसेस आर देयर दैट यू विल बी गेटिंग द सिमिलर काइंड ऑफ स्कोर। इज इट जो मैं बताना चाह रही हूँ वो समझ में आ रहा है यहाँ पे? ओके, तो अब अगर आप बोलोगे कि नहीं, मैं 90 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, सो द ओनर्स लाइज ऑन यू, देयर इज अ टू मच ऑफ बर्डन कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं जाने चाहिए। एट दिस स्टेज आर यू दैट कॉन्फिडेंट? ओके, नहीं, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिर्फ होता क्या है कि क्यों कभी कभी कोई स्टूपिड चीजों की वजह से हमारा हमको मालूम होता है आंसर क्या है, लेकिन जैसे मैंने बोला 51, 52 और सडनली आपने पहला जो 5 दिखा उस पर आपने क्लिक कर दिया। So this may happen here. Okay, so that you should solve as many as questions as possible. और फिर दूसरी बात आती है कि मैंने वहां पे जैसे अभी उसी तरह से जैसे अभी एवरेज स्टूडेंट्स को अगर पूछा कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो एवरेज स्टूडेंट बोलता है कि भाई मैंने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, अगर 80 क्वेश्चन सॉल्व किए तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि भैया फिर तुम्हारा यू विल जस्ट क्वालिफाई, forget about now getting good score। okay, क्योंकि 80 में से अगर आपके 20 क्वेश्चंस रॉन्ग गए तो आपको 220, जबकि आपने इसके पहले क्या था, आपने 110 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से 20 रॉन्ग गए, तो यू वर स्टैंडिंग फर्स्ट। और अगर आपने 80 सॉल्व किए, उसमें से 20 रॉन्ग गए, यू आर जस्ट क्वालिफाइंग, और यू आर ओके, यू आल्सो क्वालिफाइड। So that is, you should take, like say, you should solve as many as questions as possible. अगर आपने 80 सॉल्व किए और 80 में से आधे रॉन्ग गए, आधे राइट गए, तब आप कर रहे हो, आप जस्ट क्वालिफाई कर रहे हो। और दिस इज द सिनारियो फॉर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स। जस्ट इमेजिन करो, 50,000 में से 5,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो रहे हैं ओनली। तो मोस्ट ऑफ देम दे आर हियर समवेयर कि 80 सॉल्व किए, उसमें से 40 करेक्ट आए, 40 रॉन्ग गए। 80 सॉल्व किए, उसमें से मतलब 39 करेक्ट आए, 41 करेक्ट रॉन्ग गए। आई एम जस्ट क्वालिफाइंग, क्योंकि 115 या आई एम नॉट क्वालिफाइंग बिकॉज 116 वाज द कट ऑफ, और थोड़े से की वजह से मेरा क्वालिफिकेशन मिस हो गया है। So the simple thing is that you should solve as many as question as possible. Okay. Then it is going to be, the next thing is going to be, अभी जैसे मैं just आपको बता दूं कि यहाँ पे 2021 the qualification was say about at around 160, ये यहाँ पे है 160, मतलब आपके 40 क्वेश्चन करेक्ट आना चाहिए, 40 into 4 116,
और यहाँ पे 360 मतलब आपके 90 क्वेश्चंस करेक्ट आना चाहिए टू गेट द ऑल इंडिया रैंकिंग 1 एंड टू गेट द क्वालिफिकेशन हियर. Okay, so if somebody is saying that I am qualified GPAT, I will say that you haven't बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया. 125 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन बराबर आए आपके. Okay. And this also is happened कि आपने क्या किया, 80 क्वेश्चन सॉल्व किया, 80 में से 40 रॉन्ग गए, 40 बराबर आए, तो आपके 160 हो गए. 160 में से -40 करो, वो हो गए 120. यू आर नॉट, यू जस्ट क्वालिफाइड. 116 कट ऑफ था, आपको 120 मिले हैं. So the thing is you should be able to solve as many as questions as possible. Okay. अब इसमें फिर आगे की बात आती है कि मैंने कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए और कब करने चाहिए या कब नहीं करने चाहिए. So in that case what as I said that कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लो. क्वेश्चन पेपर लेने के बाद में आप 1 से 125 नंबर्स लिख लो. Solve the question paper with time period. 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में ही सॉल्व करो. Whenever you find that there is say you are not very sure about the answer, mark it somewhere. Okay, और उसके सबसे बाद में आप देखो, and this is my I will say that you will also observe कि अनमार्क क्वेश्चंस का नंबर कम रहेगा, मार्क क्वेश्चन का नंबर ज्यादा रहेगा. दैट यू आर नॉट श्योर कि ये सही है या गलत है. तो एंड आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज दैट इवन इफ इट इज मार्क क्वेश्चन यू आर नॉट वेरी श्योर, जस्ट काउंट. श्योर नहीं है फिर भी आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग गए हैं. इवन इफ द नंबर इज इक्वल, समझ लो आपके 125 में से आपके 60 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप यू वर नॉट वेरी श्योर. 60 में से 30 क्वेश्चंस सही गए, 30 क्वेश्चंस रॉन्ग गए. नाउ जस्ट डू द सिंपल कैलकुलेशन. 30 क्वेश्चन आपके सही गए तो यू अर्नड 120 मार्क्स, और 30 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग गए, यू लॉस्ट 30 मार्क्स. Still 120 minus 30, that means 90 marks you have earned. So अगर 4 क्वेश्चंस आप इस तरह से करते हो तो वेरी सिंपल है. प्रॉब्लम कब आएगा, समझ लो आपके ये नंबर कम है. ओके, आपने समझ लो 4 क्वेश्चन आपके मार्क अस्टेरिक मार्क थे. अब 4 क्वेश्चंस में से आपने देखा कि चारों के चारों रॉन्ग गए. अब मिला तो कुछ नहीं, जो आपको अभी तक मार्क्स मिल रहे थे उसमें से 4 मार्क्स आपके कम हो गए. एंड इफ आई कैन शो द फिगर, एक मिनट. If I can show the figure, is it visible? जनरल कट ऑफ दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. हाँ, तो ये जनरल कट ऑफ जो है, जैसे अभी जनरल कट ऑफ और लोएस्ट स्कोर जो मैं बता रही हूँ, तो जस्ट सी दैट लोएस्ट स्कोर हॉवर्स अराउंड -50. 40 से 50 के नजदीक माइनस स्कोर है. एंड आउट ऑफ 50,000 स्टूडेंट्स ओनली 5,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड एंड about 25,000 students have marks in negative scale. So you can just imagine कि हमारा फार्मेसी एजुकेशन कहां पर जा रहा है. And no, none of you should fall in this category कि आपका negative marking में जा रहा है. So what I said is that, like say, you should do this exercise कि एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, वो इसमें 125 है. अगर आपको ऐसे नहीं करना है, अगर आपको सिर्फ सब्जेक्ट वाइज करना है तो 25-25 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो. और फिर इफ इट हैपेंस दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इवन दो यू आर नॉट वेरी श्योर गोइंग करेक्ट आर मोर, और इवन इफ इक्वल, टेक द चांस. सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया?
4 क्वेश्चंस आपने रिस्क लेकर सॉल्व किए, 4 क्वेश्चंस में से एक बराबर आया, 3 रॉन्ग गए, यू आर +4 -3, स्टिल यू अर्न +1 मार्क। 4 क्वेश्चंस में से 2 राइट गए, 2 रॉन्ग गए, you have +8 marks, -2 marks, still you have +6। 3 राइट गए, 1 रॉन्ग गया, 12 - 1, you have earned +11 marks। 4 में से चारों रॉन्ग गए, that will be now -4 marks, जो आपने अभी तक जो आपने जमा की थी पूंजी उसमें से 4 चले गए। But again, I am saying that this happens only when students go and appear for examination without any preparation। और 50,000 स्टूडेंट्स जो अभी 44 का लिया है, actually about 48,000 students had filled the form, 4,000 students never appeared for the examination, only 44,000 students came for the examination। Out of that 44,000 students, I will say that 20,000 students have never studied and they had come for the examination। Now, fortunately, you are not in that category, so you are not going to be in the minus category, but now that is not your aim। Your aim is to get higher score। आपने पढ़ाई कर लिया, आई वॉज वेरी हैप्पी कि भी आपकी एक रीडिंग हो गई है। So now you will have to work upon these things। GPAT is not a very difficult examination, not at all। अगर आपने MBA कैट की एग्जाम देखी होगी या GRE की एग्जाम देखी होगी, TOEFL की एग्जाम देखी होगी, that really needs attention and like say it is a race against time। क्योंकि अगर कैट की एग्जाम में MBA के एग्जाम के आपने क्वेश्चन देखा तो पूरा क्वेश्चन वो एक पेज भरकर क्वेश्चन होता है, पढ़ने के लिए ही 5 मिनट लग जाते हैं, सॉल्व तो बहुत दूर की बात। दैट इज नॉट द केस फॉर GPAT। हमारे पास में 125 क्वेश्चन है, 180 मिनट्स है, इट इज मोर देन 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। So it is only thing is that we have to use it sagaciously, we have to use it wisely। जहां पे हमको आता है वो हम करें, वो हमको करना ही करना है, जहां पे नहीं आता है वो वाइजली छोड़ना है। लेकिन छोड़ा तो आप हार्डली 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो वो नहीं करना है। ओके, सो यू डू दिस एक्सरसाइज। भले ही आप 125 क्वेश्चन लेके करो या कम क्वेश्चन लेकर करो, 60 क्वेश्चन लेकर करो, एंड यू हैव टू डू इट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस। एक का रिजल्ट साइंटिफिक स्टैटिस्टिक्स है, एक का रिजल्ट मिसलीडिंग हो सकता है, 2-3 का रिजल्ट मिसलीडिंग नहीं होगा। So I will suggest that rather than doing exercise at one go of 125 question, do it in a 50-50 के क्वेश्चन में या 40-40 के क्वेश्चन में 3 बार करो, और वो उसका देखो कि आपके लिए वो क्या रिजल्ट दे रहा है। Average students, it is like say you should go and you should take and go ahead। Okay, अगर ऐसे होगा कि भी आप रिस्क ले रहे हो और क्वेश्चन आपने पढ़ाई की है, रिस्क ले रहे हो और फिर भी क्वेश्चन आंसर रॉन्ग जा रहा है, सो इट विल बी माय सिंपल सजेशन विल बी कि जब आप पढ़ाई, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब पेपर सॉल्व कर रहे हो, डोंट बर्डन योरसेल्फ टू मच। यहाँ पे एक चीज करोगे आप, और बहुत बार होता है, ओके, हर कॉलेज में 2 या 3 स्टूडेंट्स ऐसे निकलते हैं जो इस तरह से बिहेव करते हैं कि सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है ना, नहीं उसमें भी कुछ और ढूंढने की कोशिश करेंगे, अरे इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। बट for them it's my sincere request also, don't do this। The reason is any kind of examination, this is a merit list preparation examination। There are 2 kinds of this examinations I will say। One is the screening test, हमको इसके ऊपर के लेने हैं, इसके नीचे के नहीं लेने हैं। दैट स्क्रीनिंग इज लाइक ए कट ऑफ, कि इनको हमको स्टाइपेंड देना है, बाकियों को स्टाइपेंड नहीं देना है। और फिर हमारा है रैंकिंग,
मतलब किसको आईसीटी में एडमिशन मिलेगा और किसको दूसरे कॉलेज में मिलेगा ये डिसाइड करने के लिए रैंकिंग है. So any kind of this ranking examination, they always have questions which are very difficult, the questions which are very simple. Okay, so here I will just share it. I will simply say that you have here the 5 subjects, 125 questions. So it is 5 into 25. Each subject is going to get 25 questions. अब ये भले ही ये बुक के जो है बिल्कुल इक्विवेलेंट दिख रहा है, इतना इक्विवेलेंट नहीं होगा. फार्मास्यूटिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो हो सकता है 25 के बजाय वहां पे 30 क्वेश्चंस आ जाए. तो वो 5 क्वेश्चन जो है वो किसी और के हिस्से से लिए गए होंगे. But then on an average you have such kind of things. Okay, so what you see here is always every 25 question is going to be divided in this fashion. There will be 5 questions which will be easiest. Okay, जैसे मैंने आपको बोला कि इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स है, easiest. 5 questions will be easier. Then will be easy, मतलब simple है, difficulty level बढ़ रही है. Then we have difficult, and then we have more difficult. Every subject will have such kind of distribution. Most difficult question तो अपने यहाँ पे पूछा ही नहीं जाता है. So it is कि any students, अगर हमारे पास में 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट्स में से ये 5 5 5 15 15 5 75 म्हणजे कुठल्याही मुलाला 75 क्वेश्चन सहजपणे सोडवता यायला पाहिजे आणि येतीलच जर तुम्ही अभ्यास केलेला असेल. प्रॉब्लेम कुठे जाईल फक्त इथे, डिफिकल्ट किंवा मोर डिफिकल्ट. अगेन आई डोंट से दैट दीज आर डिफिकल्ट और मोर डिफिकल्ट. रीजन इज फार्मसी इज अ व्हेरी इन्फॉर्मेशन रिच फील्ड. म्हणजे आता जर कोणी विचारलं मला की US FDA ने 2021 मध्ये कुठल्या ड्रगला या डिसीज करता मान्यता दिलेली आहे, तर ती फॅक्ट आहे ना, ती मी लॉजिक लावून नाही करू शकत. And for that the question becomes very difficult for me. अरे कसा क्वेश्चन विचारला, आता मी याचं उत्तर कसं काय देऊ. दॅट इज अ फॅक्ट बेस. ओके, किंवा जर सडनली तुम्हाला विचारलं की जसं आता मागच्या वेळेस ल्युडिप्रेसचा क्वेश्चन विचारलेला होता. सो कुठल्याही ब्रँड एक्सिपियंट विचारला आणि त्याचं उत्तर विचारलं की दिस ब्रँड एक्सिपियंट्स कंटेन्स व्हिच इन्ग्रेडियंट. प्रोबॅबली वी हॅवंट कम अक्रॉस दॅट अँड देअरफॉर वी डोंट नो. Doesn't mean that we don't have brains. आणि ह्याच्यामुळे ते क्वेश्चन्स आपल्याला एकदम डिफिकल्ट वाटतात. ओके, ते डिफिकल्ट नसतात पण ते आपल्याला वाटतात. म्हणून म्हणजे हे इथले क्वेश्चन्स मी जेव्हा मी म्हटलं तुम्हाला सांगितलं की इवन द स्टुडंट हू इज स्टँडिंग फर्स्ट, he also says that out of 125 questions I solved only 110 to 115 questions. This is the reason. मग आता ह्याच्यासाठी आपल्याला अभ्यासाची पद्धत कुठली, म्हणजे आता तुम्ही जो अभ्यास केलेला आहे त्याच्यामधून तुमचा हे प्रत्येक लेवल झाली आहे का क्रॉस करून, मला इझिएस्ट क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येतात का. कारण बऱ्याच वेळेस असं होतं की आपण ऍडव्हान्स गोष्टी वाचतो आणि बेसिक जे आहे ते विसरून जातो. मग अशा पद्धतीचं बेसिक मी बघितलेलं आहे का, जर नसेल बघितलं तर मला ते बघायला हवं. कुठल्या क्वेश्चन्सला कुठल्या सब्जेक्ट्सला अशा प्रकारचे बेसिक्स जास्त विचारले जातात, मग ते जर आपण बघितले तर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, फिजिकल फार्मसी ह्यामध्ये हे बेसिक्स बऱ्यापैकी जास्त विचारले जातात. कुठल्या सब्जेक्ट्स मध्ये तुमचे ऍप्लिकेशन जास्त विचारले जात आहेत, तर परत सुटिक्स मध्ये थोडेसे ऍप्लिकेशन जास्त आहे. बायोफार्म मध्ये एखाद दुसरा छोटासा क्वेश्चन येऊ शकतो. सो लाइक से व्हॉट आय हॅव स्टडीड, आता मी माझ्याकडे काय आहे हे तुम्हाला प्रत्येकाला माहित आहे. अँड यू हॅव टू अनालाइज युअर सेल्फ की मी आतापर्यंत काय अभ्यास केलेला आहे, माझा वीक पॉइंट कुठे आहे, माझा स्ट्रॉंग पॉइंट कुठे आहे. परत तेच सांगते आहे, प्रश्न विचारला की मला त्याचं उत्तर अगदी तोंडपाठ देता यायला पाहिजे
अशी अट नाही. ते तुम्ही 11वी-12वीत करून चुकला. 11वी-12वी मध्ये एव्हरीबडी हॅड द एम की मला नीट करायची आहे आणि मला MBBS करायचं आहे. हात वरती करा, किती जणांना करायचं होतं MBBS? मोस्ट ऑफ यू, ऑलमोस्ट. तुम्ही हात वरती नाही करणार, पण आय नो दॅट 90% ऑफ यू वॉन्टेड टू डू MBBS. पण तिथे काय केलं आपण? तिथेही MCQ होते. तिथे काय केलं? पण मोठ्या मोठ्या क्लासेसने ऍडव्हर्टाइजमेंट केली, आमच्याकडे आम्ही 20,000 क्वेश्चन सॉल्व्ह करून घेतो. आणि नीट मध्ये आला क्वेश्चन 20,001, जो आपण कधीही सॉल्व्ह केलेला नव्हता. म्हणून मग आज आपण इथे आलो, कारण तिथे आपण काय केलं? तिथे विचार न करता, बेसिक न वाचता, हा प्रश्न हे उत्तर, हा प्रश्न हे उत्तर, हा प्रश्न हे उत्तर, एवढंच केलेलं आहे. पण त्याच त्या क्लासवाल्याचे 20,000 क्वेश्चन मधले प्रश्न नाही काढला जात ना, प्रश्न क्वेश्चन पेपर नाही काढला जात ना. सो हिअर ऑल्सो डोंट डू दॅट मिस्टेक. And that's why look at the question papers. Look at the kinds of questions. Try to analyze for your own. कारण कसं आहे, प्रत्येक जण वेगवेगळ्या ज्याला आपण म्हणूया प्रत्येकाची लर्निंग स्टाईल वेगळी असते आणि प्रत्येकाचा स्ट्रॉंग पॉइंट वेगळा असतो. एखाद्याला केमिकल स्ट्रक्चर खूप असं पिक्चर सारखं लक्षात राहतं, एखाद्याला कम्प्लीट लक्ष म्हणजे पूर्णचे पूर्ण पाठांतर असतं, करतो असं नाही पण लक्षात राहू शकतं. काही जणांना समजल्याशिवाय लक्षात ठेवता येत नाही. काही जणांना लिहिता छान येतं पण सांगता येत नाही. काही जणांना सब्जेक्टिव्ह आन्सर्स खूप चांगलं लिहितील पण अनालिसिस करून ABCD मधला काय आहे ते दाखवा नाही येणार. And many times you will see that it happens so की काही जण म्हणतात की आमच्याकडचा युनिव्हर्सिटी टॉपर हा होता पण त्याला GPAT मध्ये एवढे मार्क मिळाले, आणि त्याला काहीच येत नव्हतं पण त्याला GPAT मध्ये एवढे, म्हणजे GPAT परीक्षा काही बकवास आहे. इट्स नॉट बकवास. कदाचित ज्याला GPAT मध्ये जास्त मार्क मिळाले, आणि बऱ्याच वेळेस बघते मी असं की त्याला लिहायचा कंटाळा येतो. इतकं मोठं मोठं कोण लिहित बसणार, म्हणून मी शॉर्ट मध्येच लिहून आलो. असतील तुमच्यापैकी पण कोणी. आणि एखाद्याला म्हणजे सगळं म्हणजे जे सगळं काही लिहिता येत असेल व्यवस्थित. सो द एक्झामिनेशन पॅटर्न इज डिफरंट. सो लुक ॲट दॅट एक्झामिनेशन पॅटर्न. इथे तुम्हाला ACR कोणी कम्प्लीट विचारणार नाहीये, राईट द ACR ऑफ. मग जर ते कम्प्लीट विचारणार नाहीये तर कुठल्या पद्धतीने विचारते? I will ask that in sulfonamide, simplest one. In sulfonamide, which of the amino group can be substituted, or which of the group can be substituted without affecting biological activity? I will say aniline nitrogen, benzene ring, sulfoxide group, sulfonamido nitrogen. आता इथे ACR, आता तुम्हाला जर सांगितलं ना की ACR लिहा, 2 पानं लिहून काढतील. पहिल्यामध्ये लिहितील सबस्टिट्यूशन ऑन NH2 इन्क्रीजेस ऍक्टिव्हिटी, दुसऱ्या वेळेस लिहितील इट डिक्रीजेस ऍक्टिव्हिटी. मार्क्स मिळून जातात, कारण एक्झामिनर म्हणतो जाऊ द्या ना, हे बरोबर लिहिलंय ना, त्यालाच मार्क देतो. आपण धृतराष्ट्र गांधारी सारखं काम करतो, ते बघायचं नाही, जे बरोबर आहे ते बघायचं, त्याला मार्क्स द्यायचे. बट इट डजंट हॅपन सो इन GPAT ना. मग तुम्हाला तिथे ॲनिलिन नायट्रोजन काय आहे, बेन्झीन रिंग काय आहे, सल्फॉक्साइड ग्रुप काय आहे आणि सल्फोनामिडो नायट्रोजन काय आहे हे माहित असायला पाहिजे. अँड देन यू हॅव टू रिकॉल की सगळे सल्फोनामाइड्स आपण कसं लिहितो, NH2 बेन्झीन रिंग SO2 NHR. मग तो सल्फाडिमिडिन पिरिमिडिन आहे, सल्फापिरिमिडिन, सल्फामेराझिन, सल्फासिटामाइड, सल्फाथायाझोल, सल्फामिथायाझोल, सल्फिक्सोझाझोल, म्हणजे तुम्ही आयसोक्सियाझोल, थायाझोल, इमिडाझोल वेगवेगळ्या रिंग सिस्टम घेत आहात, वेगवेगळी नावं देत आहात. सो आन्सर इज गोइंग टू बी सल्फोनामिडो नायट्रोजन विदाउट अफेक्टिंग बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी. बाकीच्यांकडे केलं तर त्याला पाबा अँटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी राहणार नाही. सो दिस इज अंडरस्टँडिंग. आता जर तुम्ही मला कोणी सांगितलं की मी ACR पूर्ण केला
पण तुम्ही क्वेश्चन जो आहे, तुमच्याकडची जी इन्फॉर्मेशन होती ती क्वेश्चनला तुम्ही अप्लाय करू शकलात का? करू शकलात तर उत्तम, नाही करू शकलात तर तुम्ही फक्त पाठांतर केले, तुम्ही समजून नाही घेतले. क्वेश्चन आस्क्ड इज ओके, इन सो अँड सो बायोआयसोस्टेरिझम, किंवा मी त्याला म्हणेल इन लोसार्टॅन मॉलिक्यूल which of the following is acidic function. लोसार्टॅन मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर दिलेलं नाहीये, फक्त विचारतायत की लोसार्टॉन मॉलिक्यूल मध्ये कुठला ऍसिडिक फंक्शन आहे. and I am giving you COOH, CONH2, SO2NH2, टेट्राझोल. म्हणजे आता इथे काय झालं की मला लोसार्टॅनचं स्ट्रक्चर थोडंफार डोळ्यापुढे झळकायला हवं ना, पूर्ण 100% नाही आलं चालेल. नंतर की खालच्या 4 मधला ऍसिडिक कुठला आहे हे माहित असायला पाहिजे. आता जर बघितलं तर COH ऍसिडिक आहे, SCONH2 ऍसिडिक आहे, SO2NH2 ऍसिडिक आहे, टेट्राझोल ऍसिडिक आहे की नाही हे मला माहित नाही. मग मी काय करेन, हे 3 ऍसिडिक आहे हे माहित आहे ना मला, म्हणजे हे तिन्हीचे तिन्ही उत्तर होऊ शकत नाही. मग काय उत्तर होऊ शकतं? टेट्राझोल. म्हणजे कितीही इम्प्रोबॅबल वाटलं तरी तेच उत्तर आहे. इथे आपण शेरलॉक होम्सचा उदाहरण घ्यायचं. तो काय म्हणतो की कितीही अशक्य वाटलं पण ते इलिमिनेट केलं आणि तेच राहत आहे तर अशक्यही तेच पाहिजे. आणि जर तुम्ही लोक येऊन बघा, जाऊन बघा, लोसार्टॅन मध्ये टेट्राझोल मॉइटी आहे. आणि ते जरी नाही बघितलं, पहिला चॅप्टर बघा, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज अँड बायोलॉजिकल ऍक्शन, त्याच्यामध्ये तुम्ही बायोआयसोस्टेरिझम वाचता. त्याच्यामध्ये म्हणतात की COH, CONH2, COOH, टेट्राझोल या सगळ्या ऍसिडिक मॉइटीज आहेत. आता टेट्राझोल ऍसिडिक काय आहे हा प्रश्न मी ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये विचारू शकते. सो दिस अंडरस्टँडिंग अँड देन गोईंग आहे. आता तुम्ही अभ्यास केलेला आहे, ओके, प्रत्येक वेळेस अंडरस्टँडिंग करूनच केला जाईल असं होत नाही. ओके, काही गोष्टी असतात त्या आपल्याला लक्षात ठेवाव्या लागतात. आता जर कोणी म्हटलं की डिझोल्युशन ॲपरेटस ना, डिझोल्युशन ॲपरेटस मध्ये तुमचं ते जे बास्केट आहे तो बॉटम पासून किती खालीवर जातो, तो डिस्टन्स काय आहे. आता हा कितीही लॉजिक लावला तरी मी नाही सांगू शकत. यू हॅव टू रीड इट की हा तो खाली वरती किती जातो म्हणून. ओके, तुम्हाला डिसइंटिग्रेशन टॅबलेट डिसइंटिग्रेशन करायचे असतील तर किती टॅबलेट घ्यायच्या, एंटरिक कोटेड असतील. मी सांगून उपयोग नाहीये, जे रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीने सांगितले तेवढ्याच घ्याव्या लागतील. मग ह्या ज्या गोष्टी आहेत की फॅक्ट बेस्ड आणि बाकीच्या, त्याच्यामध्ये आपल्याला डिफरन्स करता यायला पाहिजे. किती जणांनी लॅकमन मधून अभ्यास केलेला आहे? बऱ्याच जणांनी. ओके, काही जणांना करायचं असेल. क्वेश्चन कुठून विचारले जातात? लॅकमनच्या म्हणजे चॅप्टरच्या सुरुवातीच्या पेजेस मधनं नाही. जेव्हा आपण तो सुरुवातीचे पेजेस इंट्रोडक्शन असतात आणि मग जे पुढे पुढे येत राहतात मॅट्रिक्स असिस्टेड टॅबलेट, त्याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जाईल. लास्ट टाइम क्वेश्चन दे हॅड आस्क्ड द क्वेश्चन आय थिंक रिलेटेड टू काय होतं बरं, आपलं काय होतं, झायडिस टेक्नॉलॉजी अँड अदर टेक्नॉलॉजीज, मे बी ओरोस टेक्नॉलॉजी, maybe technology related to OcuSert. So such kind of questions they had asked. So we will have to see की जेव्हा मी NDDS हा हे बघते आहे तर NDDS चॅप्टर करते आहे तर NDDS चॅप्टर मध्ये सगळ्याच पाठांतर करत बसायचं का, किंवा सगळ्याच टेक्नॉलॉजी माहित असायला पाहिजेत का? क्वेश्चन पेपर बघा, कुठल्या पद्धतीने विचारलेलं आहे ते बघा. I may ask you the question related to polymers used. Okay, I may ask this, for example, pluronics are what? I may ask luttrol is what? आणि मागच्या वर्षी लुडिप्रेस विचारलेला आहे. मग आता मी काय तर जाऊन प्रत्येकाचं असं लिहित बसू का? नाही. Just keep it in mind that whenever you are reading or whenever you are having a free time, at that time you just search for these things. ना आता तुमच्याकडे तर खूप सोपं झालेलं आहे. काहीतरी एखादी टर्म आठवली ना ती तेवढी गुगल मध्ये टाकून तुम्हाला पूर्ण मिळतं. Provided you are going to a good sites. ते बघून घ्या.
So these are the different things or different ways you can, without burdening yourself, without creating anxiety, you can improve your score. Okay. अभ्यास केल्यावरती स्कोर चांगला यायलाच पाहिजे. आता फक्त तिथे पॉइंट, मुद्दा कुठला राहतो की आपली मेंटल ॲबिलिटी, आपली स्किल, माझा वीकनेस काय आहे, माझा स्ट्रॉंग पॉइंट काय आहे, आपली स्किल, अरे हे मी ह्याच्यामध्ये 5 मिनिटं घालवलीत पण मी त्या उत्तरापर्यंत पोहोचू शकत नाही, सोडून द्यायला हवं, आता अजून 5 मिनिटं घालवलीत तरीही उत्तर बरोबर येईल की नाही मला माहित नाही. म्हणजे ह्याच्यावरती वेळ घालवायचा की नाही ते डिसाइड करता यायला पाहिजे. आता हे काय आहे, आय विल से दॅट दिस इज इमोशनल इंटेलिजन्स. IQ तुमचा आहेच आहे, त्याच्याबरोबर तुमच्याकडे मेहनत आहे. आता फक्त EQ ची गरज आहे, आता फक्त कॉमन सेन्सची गरज आहे. Then for that what you will have to do is go for previous year's question papers. Try to see that which chapters, ज्याला मी नॉलेज डोमेन म्हणते, कुठल्या राज्यावरती जास्त क्वेश्चन विचारले जातात ते मी केलेलं आहे की नाही ते मला माहित असायलाच पाहिजे. जसं एक्सरे वरती क्वेश्चन विचारला जातोय, बिकॉज एक्सरे इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज. मग पार्टिकल साइज आय एम सेइंग दॅट मायक्रोमेरिटिक्स, विस्कॉसिटी आय एम सेइंग दॅट रिओलॉजी. हे जे थर्मोडायनेमिक्स वरती पण क्वेश्चन साधारणपणे 2-3 वर्षांमधून एकदा येतोच येतो. मग ते मला थर्मोडायनेमिक्सचे चॅप्टर पूर्ण माहित असायला पाहिजे का? मला थर्मोडायनेमिक्स नाही जमत, ठीक आहे ना, पण किती लॉज आहेत ते तर बघ. व्हॉट डज लॉज सेज तेवढं तर बघा. व्हॉट आर द, आणि थर्मोडायनेमिक्स मध्ये इक्वेशन्स छोटे छोटे आहेत. व्हॉट आर द एक्सप्रेशन्स ऑफ दॅट दोज इक्वेशन्स तेवढं तर बघा. मोर दॅन सफिशियंट. डोंट गो इनटू की ते कसं डिटरमाइन कसं केलं किंवा काय केलं, काही गरज नाही. एन्थाल्पी आणि एन्ट्रॉपी मधला डिफरन्स तर बघा. So those can be the questions. So it is like, say, pick up the previous year's question papers, see what kinds of questions are asked, look at the domain, look at the topics on which the questions are frequently asked. See to it that you don't leave those topics. When you are looking at the question paper, pay attention to that, to which subject is belong, and while studying this subject, have I gone to that extent? Okay, have I gone to that depth? Is it needed that every chapter has to be done in depth? Answer is no. Some topics which we can, I say that superficial. Superficial म्हणजे मी जेव्हा तिथे तुम्हाला दाखवलं की must to know area. What are the tablet excipients? Lactose are used as tablet excipients with so and so drug causes browning of that tablet. This is because. Okay. मग ते मला माहित आहे की नाहीये. मायलार रिॲक्शन किंवा जे काही आहे ते मला मार्कोव्हिक इक्वेशन, त्याच्यामध्ये M stands for what, A stands for what, K stands for what, मला माहित आहे का नाहीये. Okay. So such kind of questions, topics have I covered? Do I have to go to the depth for each one? कुठे मला डेप्थ मध्ये जायला पाहिजे, कुठल्या टॉपिक मध्ये डेप्थ मधले क्वेश्चन विचारतात, कुठल्या टॉपिक मध्ये वरचे क्वेश्चन्स विचारतात. आता हे तुम्ही अभ्यास सुरुवातीपासून हे करायची गरज नसते. सुरुवातीचा एम हाच असतो की मला सगळा आय हॅव टू कव्हर ऑल द बेस. आणि मग त्याच्यानंतर आता हे झाल्यानंतर मग जी मी एक्सरसाइज तुम्हाला सांगितली की शुड यू टेक द रिस्क ऑर नॉट. ज्या सब्जेक्ट मध्ये आपल्याला खूप जास्त इंटरेस्ट येत नाहीये किंवा अवघड वाटतो आहे, ट्राय टू डिस्कस इट विथ समवन. ओके. असा ह्या वेळेसही असा विचार करू, आणि पर्टिक्युलरली ह्या वेळेस असा विचार करूच नका की जर कोणी तुम्ही तुमच्या मित्राला सांगत असाल की अरे मी हे वाचलं, मी तुला एक्सप्लेन करून सांगतो, तर त्याचे मार्क वाढतील आणि तुमचे कमी होतील असं नाही होणार. तुमचेही वाढतील. जर त्याचे वाढतील ना 2 मार्क तर तुमचेही नक्कीच वाढतील. इट नेव्हर हॅपन्स की आम्ही दोघांनी बरोबर अभ्यास केला आणि त्याला जास्त मार्क मिळाले म्हणजे माझे ओढून त्याने घेतले, असं नाही. सो इथे जो सब्जेक्ट तुम्हाला किंवा जो टॉपिक तुम्हाला थोडासा बोजर वाटत असेल तो साधारणपणे ग्रुपमध्ये करा किंवा पेअर मध्ये करा.
आता ग्रुपमध्ये किंवा पेअर मध्ये करताना 5-10 मिनिटं अभ्यास होतो आणि अर्धा पाऊण तास गप्पा होतात, तेवढं नको व्हायला. नाहीतर मग सगळंच मुसळ केरात. So that is the way you should go ahead for the examination. Have faith in yourself. हा विचार करा की मी अभ्यास केलेला आहे. हा विचार करा की माझ्याकडनं क्वेश्चन सुटतायत, चालेल. कारण काय होऊ शकतं की काही जणांना खूप अवघड क्वेश्चन सुरुवातीला येतील, काहींना सोपे क्वेश्चन सुरुवातीला येतील. अवघड क्वेश्चन आल्यावरती तुम्ही ते सोडून दिलेत, तेव्हाच तुमचा कॉन्फिडन्स डाऊन होतो की मी तर पहिले 5 प्रश्न सोडलेत, आता मी गेलो, आता मला काही जीपॅट क्वालिफाय होत नाही. असं होत नाही. आणि समजा खूप सोपे क्वेश्चन्स आलेत, मग त्यावेळेस काय होतं, अरे इतके सोपे क्वेश्चन कशाला एवढा अभ्यास केला, आणि त्या नादामध्ये पुढचे क्वेश्चन चुकतात. या दोन्ही गोष्टी होतात. सो व्हॉट यू हॅव टू डू इज दॅट have faith in yourself, keep your mind cool, try to help others, try to get help from others, not at the time of exam, when you are preparing, not when you are solving the exam. When you are preparing it, do it, and I feel that you will be able to get good score, and at least keep your aim high. म्हणून मी तुम्हाला तो दाखवला की तुम्हाला फक्त 90 क्वेश्चन्स बरोबर आले तरीही तुम्ही ऑल इंडिया रँकर 1 होऊ शकता. एनी वन ऑफ यू कॅन फील दॅट वे? कोणाला असं वाटतं की मी होऊ शकतो म्हणून? Please speak out. Who has the confidence that he could be or she could be the All India ranker? Please don't feel the shy. That's what I'm saying, na, that having at least have the high aim, na. बहुत हुआ तो क्या होगा, अरे फार बाता मारत होता ना त्या दिवशी, मी ऑल इंडिया रँकिंग फर्स्ट येईल आणि नाही आला म्हणून, ठीक आहे ना, काय बिघडते? नाहीतरी आपल्याला डॉक्टर व्हायचं होतं, सगळ्यांनाच व्हायचं होतं ना, नाही झालं. तसं होऊ नये म्हणून मी म्हणते आहे, तसं होऊ नये म्हणून मी म्हणते आहे की हॅव फेथ इन यू. इफ यू हॅव डन युअर स्टडीज, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू वेल. फक्त कसं आहे, आता तुम्ही ऑलरेडी म्हटलात की आमची एक हे झालेलं आहे म्हणून, रिडिंग झालेलं आहे. आता एक रिडिंग झालेल्यावरती मी माझं ज्ञान कुठे पाजळू ना? ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड मराठी? नाही? मग पाजळू म्हटलं तर ज्ञान पाजळूचा अर्थ कळला ना? तर म्हणून हे जे एक साधारणपणे चांगला अभ्यास केलेली मुलं किंवा अभ्यास झालेला आहे ती मुलं येतात आणि जे प्रश्न विचारतात त्या प्रश्नांच्या बेसिसवरती मी तुम्हाला मला जे थोडं काही कळतं ते सांगितलेलं आहे. आय होप इट विल बी ऑफ यूज टू ऑल ऑफ यू. सो I pray that you will do good in your GPAT, in your all exams and in your life. So all the best to all of you from me. And there is no big reward, or no reward is as big as the students who do well in their life. Okay. Thank you. Students, if you do have any kind of question, feel free to ask to ma'am. Okay. If anybody is having any other question, yes, am I audible to you? Yes, sir. Okay, if you have question, please ask. Yes, sir. Please come forward in front of camera and ask the question to ma'am. Ma'am, just ask one question. की आता याच्या पुढे मॅम मेंटल ॲबिलिटी सगळं अभ्यास वगैरे झालाय किंवा रिव्हिजन वगैरे झाली, तर याच्या पुढे 1 महिना एक्झाम येईपर्यंत आपण आपली मेंटल ॲबिलिटी ही कशी ठेवाय मॅम? माझ्या मते मी असं म्हणेल की जे तुमच्या बरोबरची इतर विद्यार्थी अभ्यास करतायत ना, त्याच्यामधला जो खूप जास्त मोटिवेटेड नसेल त्याच्याबरोबर जायचं, त्याच्यासोबत जायचं आणि त्याच्याशी डिस्कस करायचं. Yes, it is correct answer. जो मोटिवेटेड नाहीये ना खूप जास्त करायला,
तुझा तर फायदा होईलच, कारण त्याने अभ्यास केलेला नाही, त्याच्यामुळे तुझी रिव्हिजन होते आहे. आणि त्याच्याही कानात 2 शब्द पडतायत, तर कधीतरी जाऊन तो पण तिकडे अभिषेक करताना एखाद दुसऱ्याचा क्वेश्चन त्याचा बरोबर येऊ शकतो. आय फील दॅट इज द बेस्ट वे. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Any other, please feel free to ask the question to ma'am. मी आज खूप इन्फॉर्मल बोललेले आहे, मी कुठलाही टेक्निकल घेतलेलं नाहीये. आय नो दॅट. जर तुमची टेक्निकलची डिमांड असेल तर तीही आपण करूया. मॅम, हा बोला. ते तुमचं जे बुक आहे GPAT कंपनी आहे, हा रीड करायला पाहिजे. ते त्याला म्हणजे अगोदर ते गेट वाला पोर्शन आपण सॉल्व्ह करायला पाहिजे का, आपला जो GPAT वाला पोर्शन आहे याला अगोदर सॉल्व्ह करायला पाहिजे? आधी सुरुवातीचे जे पहिले आत्ताचे जे क्वेश्चन पेपर्स आहेत ते सॉल्व्ह करा. येस मॅम. पण मी तुम्हाला सांगते, कमीत कमी 125 मधले 25 क्वेश्चन्स असे असतात की जे पूर्वीच्या क्वेश्चन पेपर मधून काढलेले असतात. म्हणजे तेच क्वेश्चन्स परत येत नाही. म्हणजे आयदर त्यांचा स्टेम चेंज केलेला असतो, ऑप्शन्स तेच असतात, किंवा स्टेम तो राहतो, ऑप्शन्स खालचे चेंज केलेले असतात, किंवा टॉपिक तोच असतो. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की बीटा लॅक्टम वरती आहेच आहे, विस्कोसिटी वरती आहे, मायक्रोमेरिटिक्स वरती आहेच आहे. तर म्हणून मग तुम्ही असं की मी हेच वाचू किंवा हेच वाचू असं सांगता नाही येणार. पण ट्रेंड जो आहे तो आत्ताचे जे पहिले एवढे 5-6 वर्ष, म्हणजे जेव्हापासून तुमचे NTA नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने घेतली आहे जिम्मेदारी एक्झाम घ्यायची, तेव्हापासूनच्या क्वेश्चन पेपरवर आधी भर द्या. ओके, म्हणजे तेवढेच क्वेश्चन पेपर बघा असं नाही, त्याच्यावरती आधी काम करा आणि मग रेस्ट ऑफ द थिंग्स. नाउ इट विल बी, म्हणजे माझंच पुस्तक आहे आणि मीच सांगणे म्हणजे आपने मुंह मियां मिठू बनना होगा. लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टुडंट से दॅट की आम्ही लास्ट म्हणजे शेवटच्या 1 महिन्यामध्ये किंवा 2 महिन्यामध्ये तुमचं पुस्तक 1 किंवा 2 वेळेस वाचलं. ओके, अँड देन स्टील वी गॉट रिस्पेक्टेबल स्कोर. आणि मग त्यावेळेस ते म्हटलं की आम्ही दुसरं काहीच वाचलं नाही. मग त्यावेळेस मला वाईट वाटलं की दुसरं वाचलं असतं आणि त्याच्याबरोबर हे पुस्तक वाचलं असतं, यू कुड हॅव बीन एबल टू स्टँड फर्स्ट. सो this is the thing. So now it is up to you that what time is in your hand, what is your aim, आणि तुमचा बाकीचा अभ्यास किती झालेला आहे त्याच्या बेसिस वरती तुम्ही हे ठरवू शकता. Any other, please? Hello, ma'am. Find out alphabet or ring in the particular compound or particular medicinal compound. नाही मला कळलं नाही, एकदा थोडंसं Please come in front of the camera. You are not audible. आवाज नाही आला. आवाज Borole, please come in front of the camera. Speak loudly. Ma'am, how to find out the alphabet name of particular compound or particular ring in the medicinal compound? Any trick? एनी ट्रिक? बरं तुला एखादा ड्रग सांग तुला की त्याचं तुला IUPAC पाहिजे म्हणून. For example, ma'am, barbituric acid एखादं बरं मी थोडंसं मग आता इथे ह्याच्यावरती लक्ष द्या, फळावरती. You are saying that barbituric acid, is it visible? Yes, ma'am. What is this? Pyrimidine. What is this? Anyone? Mante? Yes? No? Acha, I will write it like this. Anyone? Uracil. Somebody said it, uracil. Okay. आता इथे मी एक वॉइस लिहिला तर yes, it is going to be trihydroxypyrimidine. It will be 1 2 3 4 5 6. It will be 2 4 6 trihydroxypyrimidine. Yes, ma'am. Okay. What is the relationship between these two? These are the lactam. This is called as, both the compounds will be called as barbituric acid. What those will be called as?
here at 5th position R and R1. Now what will be the IUPAC? 5 alkyl, if it is 1, 5,5-dialkyl barbituric acid. समजा इथे मी इथाइल ग्रुप घेतला आणि इथे फिनाइल ग्रुप घेतला. I will say 5-ethyl 5-phenyl barbituric acid. That is the IUPAC of it. It is the simplest one. Okay. बाकीचे अजून एखाद दुसरं सांगा, so I can explain. इथे नंबरिंग वगैरेचा काही भानगड नव्हती. इथे फक्त एकच की तुम्हाला पेरेंट कंपाऊंड ओळखता यायला पाहिजे होता. याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला कुठला पाहिजे सांगा. मॅम बीटा लॅक्टम. ओके, बीटा लॅक्टमचं काय पाहिजे तुम्हाला? IUPAC कुठल्या प्रकारचं पाहिजे? फेनॉल, जिसके अंदर फेनॉल रिंग है वो. समझा मुझे, लेकिन उसका IUPAC बहुत तरह से करते आएंगे ना. दिस इज द बीटा लैक्टम रिंग. इज इट कंप्लीट? इट्स नॉट कंप्लीट लैक्टम. यू हैव टू हैव डबल बॉन्ड O हियर, देन इट विल बिकम लैक्टम. अब यहाँ पर जब आप यू आर डूइंग इट इनटू पेनिसिलिन, सिंपल पेनिसिलिन, यू हैव हियर COOH group, CH3 CH3 NH, C double bond O R. Okay. अब आपने देखा होगा कि they have never asked the IUPAC for the or say options given are not every time complete IUPAC. अब इसका complete IUPAC देखा ना तो आपका कम से कम 4 लाइंस लग जाएंगे आपके नोटबुक से, 4 से ज्यादा लग जाएंगे. Because very first thing you will have to find out that what is the IUPAC name of this ring system. Have you done this? In fact ये नीट में भी पूछा जाता है. Anyone? Okay, मैं पहले अपन एक धीरे-धीरे जाएंगे. Now say that the question, when they have asked the question, it is that this much ring system is called as पेनाम रिंग सिस्टम. अब इस पेनाम रिंग सिस्टम में यहाँ पर कितना जो है वो है बीटा लैक्टम, कितना जो है वो है thiazolidine. So beta lactam fused to thiazolidine, it is called as penam. Then if you have COOH group, then it will be called as penicillinic acid. Okay, here you have COOH group, so it will be acid. To convert it into penicillinic acid, we need CH3. Go from 1, 2, 3, 4, 5, 6, or go from 1, 2, 3, 4, 5, 6. This position is set 6th position, so it becomes 6-amino penicillinic acid. All penicillins, they have C double bond O R group, so it is a acyl group. C double bond O R group is acyl. So this becomes acyl amino penicillinic acid. So any penicillin, say for example you have benzene, in case of penicillin G, the R group is CH2PH. So it is going to be simply benzene, or so it will be phenyl, or say it may be benzoyl. It will be phenyl acetyl amino penicillinic acid, and only position is 6. Therefore 6-phenyl acetyl amino penicillinic acid. Now if you just go to Merck index, आप सिर्फ डालो पेनिसिलिन और या बेंजिल पेनिसिलिन और उसके IUPAC से देखो, you will be getting at least 10-20 ways to nomenclate it. तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह का IUPAC जनरली पूछा नहीं जाता है. Okay, they will ask either in this fashion that it is a derivative of penicillinic acid. Okay, they are asking that penicillin is the derivative of or penam ring is beta lactam fused to thiazolidine. अगर यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रहा, clavulanic acid derivative बनेगा, पूरा नहीं, changes are there. Here you require double bond COOH. So penicillinic clavulanic acid. So similarly, if you see further, at one point they have asked the question, like say, what is this? What is the name of this ring system? Yeah. Forget about double bond O. ये भी नहीं दिया. What is the basic ring system? This was a question asked once. So अब इसमें, it's not about penicillin. It's about organic chemistry. That have you done the nomenclature of bicyclic system?
स्पिरो में भी पूछा जा सकता है। नो इट इज वेरी सिंपल, जस्ट एक समझ के लेने की बात है क्या, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया 6 7 और 8। ओके सो व्हाट 5 और 2 7, am I right? Simple. Heptane, you have the molecule which is heptane because it contains 7 atoms. अगर यहाँ पे सारे के सारे एटम्स कार्बन होते तो I would have called it as a cycloheptane, but it's not cycloheptane, it is a bicyclo, so I will call it as a bicycloheptane. Is it true? Yes, it is a bicycloheptane. But अगर bicycloheptane रहा तो कोई किसी भी ढंग से लिख सकता है। So what happens is that what we do, that this is the branch, this is the bridge. Across the bridge, how many atoms are there on one side and how many atoms are there on the other side? So here we have 2 atoms on one side, we have 3 atoms on other side. There is nothing on this bridge. Therefore, it is going to be 3.2.0. जब बड़ा वाला नंबर पहले लेना है. So we have 3.2.0. So your name of the compound is going to be bicyclo in bracket 3.2.0 heptane. Simple. अब यहाँ पर क्या है? Say we have sulfur and nitrogen. So rather than all atoms as carbon, now we have one atom as thia and another atom as azar. So अब सल्फर और नाइट्रोजन में सल्फर को मैं प्रेफरेंस दूंगी नेमिंग के लिए, नंबरिंग के लिए, because it has more atomic weight is high. So what you will say that 1 thia 1 2 3 4 1 thia 4 azar. So the name will be same, 1 thia 4 azar bicyclo in bracket 3.2.0 heptane. So that is what we have the nomenclature. ये पूछा हुआ है. You may have the nomenclature something like this. Suppose ये वाला है. So again the same thing. How many atoms are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. Now it is octane. Here is the bridge. ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ब्रिज है, ब्रिज बन रहा है इस पे. ब्रिज के ये साइड पे 2 एटम्स है, ब्रिज के ये साइड पे 2 एटम्स है और ब्रिज पर 2 एटम्स है. So it is going to be bicyclo 2-2.2.2 octane. Okay, so this is how the nomenclature is done for this bicyclic system. अब simple जैसे अभी जैसे I will show you the another question or rather question that IUPAC is asked generally for which kind of compounds whose structures are simple, so that we can be able to recall or maybe which have plenty of functional groups. जैसे मैं अभी 2 एग्जांपल देती हूँ. Say you have the structure of nifedipine. This has been asked many times. So what we have here, in case of nifedipine, the structure is nifedipine, and they are asked the IUPAC of nifedipine. So nifedipine, what is the parent compound? Parent compound is your pyridine. Which pyridine? The pyridine which doesn't have or say which has one double bond less than the original pyridine. Original pyridine is this one. इसमें 6 डबल बॉन्ड से, इसमें 2 ही है. That means डायहाइड्रोपिरिडिन. अब डायहाइड्रोपिरिडिन तो हाइड्रोजन्स कहाँ डाले हुए हैं? हाइड्रोजन्स is present on this nitrogen and hydrogen is present on this carbon. As if 1,4. So the class itself is 1,4 dihydropyridine. अब इस 1,4 dihydropyridine पर मिथाइल ग्रुप से कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स में if you recall these are the esters made up of ethyl. तो पहले में ईस्टर है लेकिन इसके पहले वो एसिड है. So I will say pyridine carboxylic acid. 1,4 dihydropyridine carboxylic acid.
So here 1, 2, 3. The carboxylic acid group is present on third position. So 1,4-dihydropyridine, 3 carboxylic acid. But there are 2 carboxylic groups. Another one is at 5. So 1,4-dihydropyridine, 3,5-dicarboxylic acid. But it is not COOH, it is ethyl. So I will say, and fortunately at both the ends we have ethyl group. So I will say 1,4-dihydropyridine, ethyl, 1,4-dihydropyridine, डाइथाइल कार्बोक्सिलेट. लेकिन बोलते वक्त नॉमेनक्लेचर के हिसाब से मुझे डाइथाइल शुरू में लिखना पड़ेगा, लास्ट में नहीं बोल सकती. So it will going to be diethyl in bracket 1,4-dihydropyridine 3,5-carboxylate. डाई वर्ड आप आगे बोल सकते हो, पीछे बोल सकते हो, प्रोवाइडेड हियर बोथ द ग्रुप्स आर सेम. अगर ऐसे होता एक जगह पे इथाइल है, दूसरी जगह पे मिथाइल है, तो आई वुड हैव टू से 3 ethyl 5 methyl 1,4-dihydropyridine carboxylate. तो इसका मतलब ही हुआ 1,4-dihydropyridine ग्रुप रिंग पर 3 और 5 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे इथाइल ईस्टर बना है, फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ईस्टर बना है. अगर दोनों जगह पे इथाइल ही है तो नो नीड टू वरी. सो इट इज गोइंग टू बी डाइइथाइल कार्बोक्सिलेट. तो खत्म हो गया. When I am doing the IUPAC, if I am doing IUPAC for GPAT, then what I should do, I shouldn't worry about कि वो कैसे पूरा IUPAC कैसे है. नहीं, मुझे ये 1,4-dihydropyridine अच्छा, और क्या है कार्बोक्सिलेट, और क्या है फिनाइल. फिनाइल पर क्या है ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो. सो इट विल गोइंग टू बी ऑर्थो नाइट्रो फिनाइल. ओके, फिर क्या है सेकंड पोजीशन पे और फिफ्थ सिक्स पोजीशन पे मिथाइल है. सो आई विल से 2,6-dimethyl. नाउ फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आई विल हैव टू चेक दिस थिंग्स कि कौन से गिवन ऑप्शन में ये सारी चीजें आ रही है, इसी फैशन में आ रही है. तो ये सिर्फ आपको लगाना है, एक के पीछे एक ट्रेन जोड़नी है, डिब्बे जोड़ने हैं. सो डिब्बे जोड़ने हैं तो भी सिंपल सी है, इट इज गोइंग टू बी डाइथाइल. शुरू में ही आप बोल दो डाइथाइल, और वो जो पहला डाइथाइल बोलने वाले हो, that diethyl is going to correspond to carboxylate present at the end. Again I use the analogy and I give the same example again and again, that if you are the whole of the family is going to watch a movie, तो सबसे बड़ा जो इंसान है उसके पास में टिकट होता है. वो क्या करता है, पहले खड़ा रहता है, मेरे पास इतने टिकट है, ये मेरी बीवी है, ये उसकी बेटी है, वो बेटी की बेटी है. तो बेटी के बेटी को सबसे अंदर भेजता है, बेटी को भेजता है, फिर बीवी को भेजता है, फिर खुद जाता है. दैट मींस the smallest one, the group which is the smallest one appears first and the parent compound appears last. Okay, whoever is the parent appears last. तो यहाँ पे आपका that pyridine carboxylic acid है, तो carboxylate सबसे आखिर में आएगा. So what we have, and don't worry about this much is more than sufficient कि आप ग्रुप्स कौन से है, पोजीशन क्या है, ये आप रिकॉल कर पा रहे हो, उनका नाम लिख पा रहे हो. अब उसको बस क्रॉस चेक करना है आपके गिवन ऑप्शंस के साथ. Okay, so what it happens is that your molecule is going to be diethyl in bracket 2,6-dimethyl 4 in bracket orthonitrophenyl bracket complete 1,4-dihydropyridine bracket complete carboxylate. कोई भी डिपिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप इसमें से बना सकते हो. डिपिन में सारे डिपिन सिमिलर है, जहां पे सिर्फ आपको ये ग्रुप्स अलग मिलेंगे. हो सकता है यहाँ के आर ग्रुप्स अलग मिलेंगे, हो सकता है ऑर्थो के बजाय पैरा रहे, हो सकता है साइक्लिक सिस्टम रहे, फॉर एग्जांपल इसराडिपिन. सो दैट कैन बी द वे. I will take one more example. Say I'm considering that you are interested, otherwise I can stop.
Can anyone recall what this drug is? This is indomethacin. Okay. This is indomethacin. Now, indomethacin, say you are studying in the chapter of NSAIDs. Okay. Now, I will say that where I am studying NSAID, मेडिसिनल केमिस्ट्री अगर आपको किसी को डिफिकल्ट जाता होगा तो ड्रग का नाम जोर से बोलो, which pharmacological category, कौन से चैप्टर में पढ़ रहे हो आप ये बोलो. तो चैप्टर आई एम रीडिंग इज NSAID. केमिकल क्लास क्या है ये बोलो. केमिकल क्लास हियर इज दैट इट बिलोंग्स टू अराइल एसिटिक एसिड. और उसके लास्ट में बोलो उसका मोड ऑफ एक्शन इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंस. जैसे हो गया NSAID, इंडोमेथासिन, NSAID, अराइल एसिटिक एसिड, कॉक्स, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, कॉक्स 1, कॉक्स 2. अगर मुझे थोड़ा सा और ज्यादा आगे जाना है तो मैं बोलूंगी इट इज अ लिटिल बिट ऑफ कॉक्स 1 सिलेक्टिव, कॉक्स 2 सिलेक्टिविटी बहुत कम है. It inclines towards the inhibition of कॉक्स 1. अराइल एसिटिक एसिड. अगर कोई स्टूडेंट ये अराइल एसिटिक एसिड ये ना समझते हुए जब अगर सिर्फ स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कर रहा है, आई गारंटी यू दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पे अटेंशन टू दिस वन. सो इट बिकम्स इंडोर. ओके, बराबर है, कोई बात नहीं. आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, आपको आईयूपीसी निकालना है या आपको स्ट्रक्चर निकालना है, इंडोर लिखा, नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट देन विद दिस 90% ऑफ स्टूडेंट्स फॉरगेट कि यहां पर क्या है. They forget it because they have never thought that indomethacin belongs to chemical class of aryl acetic acid. So now what I should do, or as a understanding, what I should do is that aryl acetic acid. So where is the acetic acid? Yes, this is acetic acid. Okay, अब ये acetic acid पे what is the aryl group? Indomethacin. Aryl group is indole. Okay, अगर aryl group indole है, so it will be indole acetic acid. Again, writing it properly, जो आपको proportionate लगेगा. Otherwise, you will think that I am not able to write the structures. तो अब अगर मुझे इसका आईयूपीसी लिखना है तो पहले मैंने क्या देखना चाहिए? एसिटिक एसिड. व्हाट इज देयर? इंडोल. एसिटिक एसिड और इंडोल एक दूसरे को कैसे अटैच्ड है? तो एसिटिक एसिड का दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2. ऑन द सेकंड पोजीशन ऑफ एसिटिक एसिड indole is present and that indole is attached at 1, 2, 3. Okay, so it is going to be 3 indolyl, 2 acetic acid. बहुत बार 2 दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि सिंपल है, एसिटिक एसिड में यही एक पोजीशन है जहां पे हम ग्रुप रख सकते हैं. ये कार्बन पे तो इंडोल नहीं रख सकते, तो बोलो या मत बोलो चलेगा. बट ऐसे मैं सीख रही हूं तो मैं वो 2 रखती हूं. सो इट इज गोइंग टू बी 3 indolyl, 2 acetic acid. That is the parent compound. Now it becomes so easy. अब क्या करना है? सिर्फ बाकी के ग्रुप्स क्या है वो देखना है. तो नंबरिंग तो मुझे यहां से पता है, 1, 2 इंडोल का नंबरिंग पता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So I have 2 methyl. Okay. I have 5 methoxy. I have let's गलत कर दिया यहाँ. 5 methoxy. 1 position. 1 पर क्या है? Can anyone tell me? What is there on 1? Anyone?
हाँ सर, ये हो गया है क्या? हेलो हेलो। यस मैम, लाइट डिस्कनेक्ट हो गए मैम। अच्छा 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 अच्छा। मेन क्लासरूम में से लाइट डिस्कनेक्ट हो हाँ गए। तो रुकू क्या थोड़ी देर, फिर मैं मतलब अभी खत्म ही होते आ रहा था, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ जी जी मैम, मैं स्टार्ट करता हूँ मैम, 2 मिनट है ना। मैं रुकती हूँ। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, रुकू या ना रुकू ऐसा। ओके। ये बस थोडा वेळ संपदा चालू नाही, बस अजून ते ना मध्ये डिस्कनेक्ट झालंय. संपतच आलं ते, थोडं ब्रेक झाल्यामुळे थोडं थांबले. Ma'am, हाँ. I'm student now. They have joined on. Yes, I can see it. So, coming back, we have, as I said, endomethacin, NSAID, aryl acetic acid, a non-specific COX inhibitor. So we have here acetic acid moiety, acetic acid number 1 and 2. तो अगर हम जब दो चीजें एक दूसरे को जुड़ रही है, तो पहले वाले का कौन सा नंबर, दूसरे वाले का कौन सा नंबर, ये दोनों बताना है. When I say that we have to shake hand, so if it is my right hand, then which hand of the next person, अगर generally it is going to be right hand, लेकिन हो सकता है कि आगे वाला person lefty हो, तो his very first instinct will be to offer a left hand. So similarly here, इसका one position, लेकिन इसका कौन सा? So it is going to be 1, 2, 3. So it is 3 indolin, 2 acetic acid is the parent compound. Acid function है तो parent compound में आएगा. अब what are the other groups?
2-methyl, 5-methoxy. Okay, 1. Now I was asking that what is the name of this group? Okay, so this is, we have C double bond O. So C double bond O carbonate with phenyl. So it is going to be benzoyl. Ben. It is going to be benzoyl. Benzoyl. 1 benzoyl. Okay. Yeah, one position पे benzoyl था. ठीक है. 1 benzoyl. But benzoyl is not alone. Benzoyl itself is carrying a chloro group at 4th position or at para position. So I will say here 1 in bracket para chlorobenzoyl. So I have, अब मेरे पास में रेसिपी बनाने के लिए सारी चीजें काट कूट कर रखी हुई है, सिर्फ एक दूसरे के साथ में उनको जोड़ना है. So what it is going to be? अब वो जो आपके IUPAC के जो छोटे-छोटे रूल है, मिथाइल है तो या आपका ये मिथाइल है, मिथॉक्सी है, तो पहले मिथॉक्सी लो फिर मिथाइल लो. So it is going to be 5-methoxy, 2-methyl, 1 in bracket para chlorobenzoyl bracket complete, 3-indolyl acetic acid. So in short, when you are writing the IUPAC, first find out what is the parent compound, then find name it. Name देने के बाद में उसको नंबरिंग कर लो. नंबरिंग करने के बाद में बाकी के जो ग्रुप्स प्रेजेंट है उनकी लिस्ट बना लो और फिर लास्ट में वो सारे एक दूसरे बराबर एक दूसरे के पीछे आना चाहिए. जहां पे जैसे अभी यहाँ पे para chlorobenzoyl इंडोलिल एसिटिक एसिड, क्लोरो ग्रुप पेरेंट कंपाउंड से सबसे दूर है लेकिन IUPAC में सबसे पहले आएगा. ठीक है, वो वाले पोजीशन में. So 1 in bracket para chlorobenzoyl, 3-indolyl acetic acid. बचे दो ग्रुप 2-methyl और 5-methoxy. So that is the way you will have to see. अब समझ लो कि आपने सिंपल छोटा सा कंपाउंड ले रही हूँ. Say here it is metronidazole. Okay. Metronidazole ये छोटा सा कंपाउंड लिया. So on this, what is the parent compound? Someone may say that imidazole. Not wrong. Okay. So numbering 1, 2, 3, 4, 5. 5-nitro, 2-methyl. अब M पहले आता है, N बाद में आता है. So 2-methyl, 5-nitro, 1 पर क्या है? तो एक और दो इथाइल ग्रुप है. 1 in bracket इथाइल. लेकिन इथाइल अकेला नहीं है. इथाइल पर क्या है? हाइड्रोक्सी है. कौन से पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे. सो इट इज गोइंग टू बी 1 in bracket 2-hydroxy ethyl. It is going to be 1 in bracket 2-hydroxy ethyl. अब आ गए आपके पास में क्या क्या हो गया? 5-nitro, आपके पास हो गया 2-methyl, ये हो गया आपका 1, मतलब ये 1 भी नहीं लिखा तो 2-hydroxy ethyl. अब मुझे सिर्फ पोजीशंस बतानी है. 2-methyl, 5-nitro, 1 in bracket 2-hydroxy ethyl. Parent compound is imidazole. बन गया ना? अब अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे कभी तो यहाँ पे आपको नाम मिलेगा इथेनॉल. Okay, so it is going to be CH3 here, NO2 here, correct? CH2, CH2, OH. So it is ethanol 1 and 2. Yes. On second position, imidazole group. So 2 in bracket 1 imidazolyl. लेकिन इमिडाजोल अकेला नहीं है. So it is 2-methyl. वो तो आपको पहले से पता है. 2-methyl, 5-nitro, imidazolyl bracket complete ethanol. That can also be the IUPAC. So IUPAC doesn't mean that you have to mark the IUPAC. IUPAC मतलब आप स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर पर से पेरेंट कंपाउंड डिसाइड करो,
पेरेंट कंपाउंड डिसाइड करने के बाद में नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करने के बाद में वो ग्रुप्स देखो कौन से हैं, उनको एक दूसरे के नीचे लिस्ट करते चलो और लास्ट में उनको ज्वाइन करो। ये ज्वाइनिंग नहीं भी किया तो भी आयु आपका इन केस ऑफ GPAT either question asked based on IUPAC is that generic name दिया है और फिर पूछा है कि what is the IUPAC of the compound, जैसे lipid the IUPAC of nifedipine is और नीचे 4 चीजें दी हुई है, या फिर this is the IUPAC और ये IUPAC पर से कंपाउंड कौन सा है ये ढूंढो। तो आप IUPAC पे से स्ट्रक्चर भी निकालते आना चाहिए। तो वो कब निकालते आएगा, जब आपको ये स्ट्रक्चर कैसे बना है ये समझेगा। समझ लो मुझे मेट्रोनिडाजोल का स्ट्रक्चर इस तरह से लिखना है, इस तरह से बनाना है, 2 मिथाइल 5 नाइट्रो, ये स्ट्रक्चर नेम दिया हुआ है 2 in bracket 2 methyl 5 nitro 2 imidazolil ब्रैकेट कंप्लीट इथेनॉल। ये मुझे IUPAC दी हुई है, तो अब मुझे इससे स्ट्रक्चर निकालना है। तो स्ट्रक्चर निकालने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, व्हाट इज द पेरेंट कंपाउंड, पेरेंट कंपाउंड इज इथेनॉल, सो आई विल राइट 1 कार्बन 2 कार्बन एंड OH ग्रुप। ओके, अब इस पर क्या है, ये 2 belongs to this ethanol. Okay, so on the second position 1 and 2, on the second position what is the group present? Now you shouldn't say 2 methyl. On the second position the group present is imidazolil. तो मुझे यहाँ पे imidazole निकालते आना चाहिए। Okay, so this is the imidazole. Imidazole is present on which position? अरे मैंने गलत बोला, sorry ना, 1 imidazole. Imidazole कौन सी position पे, तो ये 1 position. So it is 1 imidazole, so I should be able to write this imidazole in this fashion. Okay. Now imidazole पर क्या है, 2 methyl and 5 nitro, 2 methyl and 5 nitro. So the purpose of IUPAC is, अगर मैंने IUPAC दिया तो जो स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड है नॉर्मल रूल्स यूज करके, वो स्ट्रक्चर मैंने भी वही निकालना चाहिए, आपने भी वही निकालना चाहिए, अगर कोई टिम्बकटू में बैठा हुआ साइंटिस्ट है उसने भी वही निकालना चाहिए। Okay, so that is the way that is how the IUPAC is done. Okay, lastly आपका ये CH2 रहने वाला है, valency of carbon is 4. Okay, so this is the way you can do the IUPAC. If you see the question papers, then you will find that IUPAC are generally asked for the structures which are easy to remember. जैसे अभी हो सकता है मैं पायराजिनामाइड के लिए पूछूं, इथेनब्यूटॉल के लिए पूछूं, या फिर मैं कभी रिफाम्पिसिन के लिए IUPAC नहीं पूछूंगी, या कभी मैं इरिथ्रोमाइसिन के लिए IUPAC नहीं पूछूंगी। हाँ, इरिथ्रोमाइसिन के लिए क्या पूछूंगी, दैट इरिथ्रोमाइसिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन, व्हाट इज द डिफरेंस, और आई मे से दैट अजिथ्रोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, व्हाट इज द डिफरेंस। Okay, such kind of questions can be asked. So this is how your studies should go ahead. I hope with these 2-3 examples I am able to explain. Yes, ma'am. You have cleared the concept of the student regarding the episode nomenclature. This is not 2 hours, ma'am. I think that this is the extract of your 26 years of experience in teaching, especially for GPAT examination. I am thankful to you for giving your precious time to our students, and they have carefully listened to you. They were actually very eager to listen to you. You have also shared the smart tricks for the examination, and you properly said that accuracy and one should solve more number of questions, then there is more chances of qualification. Yes. You also described that if you are not interested in some particular subject, so one should not go syllabus as per the one line to line of that particular book or particular syllabus. You should be very selective in that particular subject. You more specifically explained that how one should read the organic chemistry and medicinal chemistry, and really I am highly impressed with your teaching techniques, especially even in online mode you are teaching on the blackboard. It is quite appreciable. This is the way I teach online also, sir. Yes. It gives different kinds of impression. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your precious time. All the best to all the students. I hope I was able to like say what this 2.5 hours is. It is going to be beneficial to you.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Chalo, sir, then should I leave the meeting, sir? Yes, ma'am.